Hey everybody, I'm here. So please help in P6. I'm not here to talk about P6 Rubab. I'm here to talk about acid, bases, and salts. And this is the part two of our marathon. It's basically continuation from where we left off. Even if you've not watched the previous part one of acid, bases, and salts, which is already present on my YouTube at Carboxyl Chem, Fari, I will follow you back. Please, let's focus on studying as of now. So, what I was about to tell Rubab that it's part one is present, part two, even if you've not watched part one, you'll be able to understand this part, right? So, don't worry. But I'm not talking about P6 or P4. If you guys are interested in P6 and P4, wait for your turn. And also, I have the past paper portal which is live for P6 or P4 depending on whether you are an O-level student or IGCSE student. IGCSE calls it P6 which is ATP and O-level students call it P4 which is your ATP paper. So if you guys are very weak in P6 and P4, firstly watch my 4 marathon classes on YouTube. They'll solve a lot of your questions, right? If you can't afford my yearly portal. But if you can afford my yearly portal, I'd suggest go over the 2023 set of the yearly portal because the 2023 set are effectively 11, 12 papers that I've segregated in a topical format and which if you guys watch once, you'll be able to ace your ATP paper. So it's up to you guys. If you can't afford it, that's absolutely okay. Watch my YouTube marathons. If you can, go for that. Sir, why aren't mocks getting cancelled? YouTube पे भी Rubab. On YouTube, we also have marathons present for ATP, please. I'm not talking about electrolysis now. Please let me just answer, sir. How you cheat teach? I am new. Shut up, Thunderbolt. Ayub Ahmed saying, I'm first. It's my first time here, sir. Good morning, Ayub. What's up? I'm glad it's your first time because you wouldn't be able to, withstand me or my wit. I'm a very lame guy. I'm a very lame guy. So this is where we left off last time. We talked a lot about acid, bases, and salts. Hi, Huran. Huran is saying it's also my first time. Great to hear that, Huran. I couldn't care. No, I am caring. Huran, wonderful, wonderful. Yeah. So, sir, I am intimidated. No, don't be intimidated. Kill yourself. No, I'm joking. I'm joking. You please. I'm joking, guys. Relax. Don't cancel me. So you sound like an anime character, Lamfao. Manal, Lamfao, Lamao, whatever you use. मतलब मैं क्या कहूँ? Sound like an sir, you are giving mentally unstable vibes. Yes, Fahad, right at you, right back at you. We are all mentally unstable. Naswar Khan is also present in the class. Sir, what's your favorite movie? Sir, will you invite us to your shadi? Naswar Khan, this is a chemistry class, not my personal get to know me class. Thank you. Yeah. Sir, Dayan mentioned you on story. Yes, that's awesome. Dayan, what the hell? What the hell is that about? Hey, stop exposing me. What type of pictures are you sending of me where I am strangling myself to death? Please, can we continue without further ado? Because I'm very sleepy and I just want quickly to be done with the acid, bases, and salts idea. Please, because I'm just left with the idea of strong acids, weak acids, and then we're going to do all the reactions that I know a lot of students struggle with. Yes, we are going to do balancing Hokayan Khan, so we're going to do that. But first, I want to discuss the idea of strong acid and weak acid and all. Sir, you are a bigger celebrity than Dayan. What are you talking about? बच्चे क्या कह रहे हो? Relax, relax. Yeah. Acha, can I start everybody? If your shenanigans are done with, can I start, please? Please, can I start? Please. Thank you. So, I was talking about strong acid and weak acid in the last class. Now, what exactly is a strong acid and what exactly is a weak acid? Now, this is a concept which is very much misunderstood in O levels and IGCSE and even in A levels to much extent. A strong acid is an acid that fully ionizes in an aqueous solution. And what do we mean by an aqueous solution? Aqueous solution literally means when you dissolve something in water, right? So a strong acid is an acid which will fully ionize if you dissolve it in water. Dissolved in water. Yeah.
That's what we mean by when we say an aqueous solution. Now, what exactly does this mean? What it means is very simple. If I take HCl and I dissolve it in water, it becomes HCl aqueous, and HCl aqueous is effectively what? You have a hydrogen ion and you have a chloride ion. That's all. So a strong acid is an acid that fully ionizes, which means if you had 100 HCl's, all 100 HCl are going to be converted into H plus and Cl1 minus. That's what we mean by the fact that it fully ionizes. Ionizes means fully splits into ions in an aqueous solution or when dissolved in water. So if you had 100 HCl fellas, all of these 100 will convert into hydrogen ions and chloride ions. And sir, there's an evidence behind it. What's the evidence? The evidence is you see this forward arrow. And the forward arrow is what? It symbolizes an irreversible reaction, doesn't it? What that means is an irreversible reaction normally goes into what? 100% completion. So the reason why we use the single forward arrow is because we say that the entire reaction goes into 100% completion, which what that means is it fully ionizes in an aqueous solution. Please, can we focus on chemistry and not talk about bulbule and shulbule and bulbule and mulbule? Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Okay, so that's the idea. Just like sulfuric acid, H2SO4, that's a pretty strong acid. Why is it a strong acid? See, I'm even representing it with a forward arrow, which indicates 100% completion of the reaction, which indicates that the acid is a strong acid. Why does this forward arrow indicate that it's a strong acid? Because by forward arrow, we mean all of this goes into hydrogen ions and sulfate ions. And what that means is that this fella has fully ionized in an aqueous solution, right? And if you were to balance it, you have two hydrogens on the left, you must have two hydrogens on the right. You had one SO4 on the left, you also have one SO4 on the right. Guys, can you guys stop cussing each other out? Matlab, Manal, please, this is not a good, please relax, Manal, please. Can we have, a little chill pill? Guys, or if you guys will behave like children, I think I should then mute the everyone chat. The reason why the everyone chat is open, so I can hear everybody's talk, I can hear everybody interact with each other and also interact with me, but all eyes should be on me right now. All eyes on me. आंखें मिलाने वाले दिल को चुरा, right? Please, अपनी आंखें मेरे से मिलाएं. खुदा का खौफ करें, एक दूसरे से आंखें ना मिलाएं और ना एक दूसरे को अपनी गंदी आंखें दिखाएं. ठीक है, मैं भी एक बहुत अच्छा इंसान हूं जो आपकी आंखें सब वो कर रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं. ठीक है, सो प्लीज कैन वी फोकस हियर. थैंक यू. नाउ, what exactly do we mean by a weak acid? A weak acid is an acid which partially ionizes in an aqueous solution. And see, it's the opposite of that, right? It's the opposite of the above. A strong acid was a fella which fully ionized in an aqueous solution. That's why we showed it with a forward arrow which indicated 100% completion, which meant all of this goes into this, all of this goes into this, right? But partially ionizes in an aqueous solution means that it only very slightly ionizes. If you are a PSN Edexcel student, in A levels, you'll study that even this phrase is incorrect to much extent. You don't use the word partially ionizes in PSN Edexcel, although you are using it in Cambridge, but in PSN Edexcel or when you go into A level Edexcel, you realize that we use the word only very slightly ionizes. Only very slightly ionizes in an aqueous solution. And by the way, I also think this is better English for it. But if you're a Cambridge student, you should use what I've written on the left-hand side. Right? Only very slightly ionizes. What this means is if you have a weak acid, what are the examples of weak acid? Weak acid is, normally all your organic acids are weak acids, normally, right? So organic acids like ethanoic acid. Have you ever seen ethanoic acid? Ethanoic acid is effectively vinegar, the sarka that you guys eat. Oh, sorry, you don't eat sarka. What am I saying? I'm crazy. The sarka that you guys use in your salads, the vinegar. So it's like organic. Vinegar is basically ethanoic acid. And how do you write ethanoic acid? Ethanoic acid is what? CH3COOH. If you don't know that ethanoic acid is CH3COOH, please watch my organic chemistry
recording my organic chemistry part 1 and part 2. So this is ethanoic acid. And if it's a weak acid, what that means is it will only very slightly ionize, or it will partially ionize in an aqueous solution. And because it does not go into 100% complete, partially ionized just means it does not, the reaction does not go into 100% completion. That is the reason why we represent it with a reversible arrow. That is the reason why we represent it with a forward arrow and a backward arrow, because we want to tell the examiner that the reaction is a reversible reaction. It does not go into completion. No, 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 no. That's why it's a weak acid, right? It does not go into completion. Yeah. And so if you have aqueous this fella, ethanoic acid, it will give you a hydrogen ion and it will give you the ethanoate ion, which is CH3COO minus. CH3COO minus, and it'll give you the hydrogen ion. Now remember, it'll give you the hydrogen ion and it'll give you the ethanoate ion. But the reason why I am saying that it's a weak acid is because it partially ionizes in an aqueous solution. And partial ionization literally means that if you had 100 molecules of CH3COOH, do you know how many molecules went into hydrogen ions? How many of these molecules ionized? Only about 1%, right? So if you look at vinegar, if you look at a bottle of vinegar, do you know what happens? In a bottle of vinegar, you have a lot of CH3COOH as is. You have CH3COOH. Only 1% do you have the hydrogen ion and the ethanoate ion. Only 1%. That's all. So you're only going to have 1% of these fellas. That's why we represent it with a reversible arrow to show that the reaction does not go into completion. You know, please change your name. ये जिसने लिखा हुआ है, sir, I don't understand why this is reversible. I have answered it, but also please change your name. Sir, what is the reaction of this weak acid? What do you mean, what's the reaction of this weak acid? A weak acid only slightly ionizes in an aqueous solution. It only partially ionizes in an aqueous solution. Yeah? Why do acid ionize? Because of their bonding, not concerns us. Okay. Done, guys. Similarly, and this is obviously the dissociation equation for it that I've written, and I've explained the dissociation equations in the last class, right? So this is a weak acid, and what are the other weak acid? Like, for example, you have what's it called? Methanoic acid, ethanoic acid. So you must be tired of dealing with these students. Absolutely. You have citric acid. You have carbonic acid. These acids are weak acids. Strong acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, which is HNO3, and all of that good stuff, right? So they'll go into full ionization, fully ionize. What are the observation? There's no observation. So do you know Japan may turning footsteps into electricity? I couldn't care less as of now. Do we understand the concept of strong acid and weak acid first? Yeah. So if you are asked in the exam, what in the hell is a strong acid? A strong acid fully ionizes in an aqueous solution. A weak acid only very slightly ionizes in an aqueous solution. Or if you're a Cambridge student, you write the word it partially ionizes in an aqueous solution. Although partially English is incorrect, but in O-level Cambridge exams and in A-level Cambridge exam, they use the term partially ionizes. So you better use this term. Do I have to know the examples? The examples, you just need to know about you just need to know about organic acid in general, that, ethanoic acid, methanoic acid, they are weak acids. So, if you were to write the dissociation equations for them, you have to show it like so, you know. And for strong acids, just three examples are good, which is nitric acid, hydrochloric acid, and sulfuric acid. And you must have done so much chemistry in your life that these three acids would have been inbuilt in your brain that these are strong acids. Are weak acid mostly organic acids? Rubab, I've said that a billion times now. Romesh is saying moles karwa dein. Moles are already uploaded onto my YouTube. Sir, when organic chemistry already uploaded onto my YouTube. Can we focus on what we're doing right now? If not, then it's useless for me to just go on talk, yappa. Can we do that, please?
Would you all be kind enough to ask when I'll do flana, timkana, when will I dance, when will I sing, when will I talk, when will I shave my head off, when will I shave my beard? Can we all talk about that towards the end of the class? I give you guys enough time at the start of the class to exhaust all of these questions, you know. But if they are still, I think they are inexhaustible, you know. I think they're gonna go on and haunt me through the rest of my life. So please, can we just focus on strong acid and weak acid as of now? Organic chemistry marathons are available, Hania. Don't watch the lectures. If you're interested in lectures, you can contact Miss Naiba, but the marathons are there. Okay, great. So we're done with strong acids and weak acid. Now, the concept of strong acid and weak acid is misunderstood by a lot of students as well as a lot of teachers. Understand that the idea of strong and the idea of weak has to do with dissociation. Remember this, or ionization. A strong acid is an acid which fully ionizes in an aqueous solution. A weak acid is an acid which partially ionizes in an aqueous solution, right? It has partial ionization and the other fella has full ionization. That's why strong acid is represented with a forward arrow, whereas a weak acid is represented with a reversible arrow. Great stuff. Now, that's the idea of strong and weak. But also understand there's also the idea of concentration. Now, I'm going to say something which a lot of teachers are going to mind. But if you have a strong acid and if you have a weak acid, normally, if they have the same concentration, and this is the assumption that you're going to use in your exams, if they have the same concentration, which one will have the lower pH? Which one will have the lower pH? pH is the concentration of hydrogen ions, right? It's the negative log of concentration of hydrogen ions in an aqueous solution. We couldn't care less. But which of these would have a lower pH? Strong, same concentration means you have 1 mole per dm cube of, let's suppose, hydrochloric acid, and you have 1 mole per dm cube of ethanoic acid, let's suppose, right? So which one will have a lower pH? Lower pH means stronger acid. Lower pH means stronger acid. And which fella is stronger acid? That's obviously hydrochloric acid. So if you have a lower pH between the strong and the weak acid, it'll be of the stronger acid, and that's hydrochloric acid. And the assumption that you guys are going to use here is the fact that we are going to assume forever and ever and ever that weak and strong acids have the same concentration if the examiner is silent in the questions. And normally the examiner is silent in the exam. But also try to understand, if in an MCQ I ask you something, okay, A part, B part, which is a strong acid will always have a lower pH than a weak acid. Because see, if your concepts are weak now, you might be able to do the theory paper, but MCQs are going to cook you. Hence, MCQs are easier, but if your concepts are strong, right? So a strong acid will always have a lower pH than a weak acid. Is A correct or no? I'll just give you A option. Let's suppose in the exam you are given 4 options, which one is the correct statement. Now in the above case scenario, I said that normally strong acids will have a lower pH. Why would they have a lower pH? Because we are going to assume that strong acids and weak acids, they have the same concentration. Hence strong acids are going to have a lower pH because they will fully ionize and so on and so forth, right? But if I tell you guys in an MCQ question that a strong acid will always have a lower pH than a weak acid, then I'd say, remember this. The term always is very, very alarming. You're going to check out all the 4 options out, but also know that amongst all 4 options, if there's another option that is truly, truly making sense to you, go for that option. Because remember, a strong acid does not necessarily have to have a lower pH than a weak acid, because pH depends on the concentration of hydrogen ions. pH depends on the concentration of hydrogen ions, right?
And because pH depends on the concentration of hydrogen ions, normally when we talk about strong acids and weak acids, strong acids have higher concentration of hydrogen ions for the same concentration. If this is also 1 mole per dm cube and that's also 1 mole per dm cube, the strong acid, since it fully ionizes, it's going to have more hydrogen ions compared to a weak acid. And if it has more hydrogen ions compared to a weak acid, therefore it'll have a lower pH. But it's also very much possible that a strong acid, if you add it to water, if you add it to water, and you dilute it, it is very possible that a very dilute strong acid, a very dilute strong acid is compared with a very concentrated weak acid. And it is absolutely possible that a very concentrated weak acid has a lower pH. This is absolutely possible because, again, pH has to do with the concentration of hydrogen ions, right? The concentration of hydrogen ions. And if the weak acid is very concentrated, it is absolutely possible that it has a lower pH compared to the stronger, more dilute acid. But if you generally compare a strong acid to a weak acid without talking about their concentrations, we will just assume that they are going to have the same concentration, and therefore we'll say the stronger acid will have the lower pH. So please never, ever, ever, if the concentrations are same, Rabia, I literally told you, since the stronger acid fully ionizes in an aqueous solution, it'll have more hydrogen ions ka concentration, and that is the reason why it will have a lower pH. Right? And this is what we will assume in normal questions. But be careful of this MCQ, because I have a very strong hunch that this MCQ part is going to be tested in the exam this year round. This is a very strong hunch that I have. Ramisha, if you add water, you basically dilute the strong acid. Have you never been to a lab in O levels and IGCC? If you go to the lab, the hydrochloric acid that your teachers use, they always put a lot of water in it to dilute it so that it does not burn your hands. Rabia, sing slower, please. Rabia, if you have ever been to a lab in O levels in IGCSE, I was saying that if you see the hydrochloric acid bottle, it can even burn you. So your teachers put in a lot of water to dilute it so that the concentration of hydrogen ions decreases compared to the volume of the solution, and that is why it's not gonna burn you. Now got it? Sir is speaking like he has autism. I think you only understand autism. You don't understand proper, quick, fast-paced English. It's okay. You guys are here. Kurt is saying jawab de dein. Sir, what do we write? HCl goes into Cl1 minus plus H3O plus. Kirk, watch the recording. I've already explained this. Watch part 1 for this. HCl plus H2O goes into hydrogen ion chloride. I'm not going to answer this, Kirk, because I've already answered it. Go watch on my YouTube acid, bases, and salts marathon 1. You will get all your answers with regard to dissociation equations. Please, I couldn't care less about dissociation equations as of now. Right? Then we also talk about strong bases and weak bases. And again, normally the weak base that you need to know is only ammonia, right? Ammonia is a weak base. And that's why when ammonia is dissolved in water, since bases are proton acceptors, it's going to accept a proton, and since it's a weak base, we show a reversible sign, and you end up with, since the ammonia basically gains a hydrogen ion, it becomes the ammonium ion, NH4 plus. Why? Because see, this was NH3, it gained one hydrogen, so it becomes NH4 and one positive sign, so NH4 plus, and you are left with OH minus from water, because water had H plus and OH minus, it gave the H plus, you're only left with OH minus. And that's why ammonia is a weak base, because see, it only partially ionizes in an aqueous solution. And similarly, strong bases are like sodium hydroxide. They are gonna have a higher pH, about 13ish to 14ish. Weak bases have a relatively lower pH, above 7, but relatively lower, about 8ish, 9ish, 8ish kareeb. So NaOH, potassium hydroxide, these are normally strong bases, and that's why they fully ionize in an aqueous solution, which means they give you sodium ions and hydroxide ions, and obviously we represent it with a forward looking arrow. Done. So this is the idea of strong acids and weak acids, and strong alkalis or strong bases and weak bases or weak alkalis.
What's the difference between alkali and a base? Again, already explained in part one. This is not the time. I'm here to solve equations, please. I'm here to teach you guys balancing equation. Alkalis are just soluble bases. सर आप भागते ही जा रहे हैं. The reason why I'm running is because I've already explained all of this in part one, guys. Don't ask me about dissociation equations. You guys can check on my YouTube part one for it. And now I'll upload it onto YouTube, Zainab. Let me watch that first. No, Rabia, you don't need to watch it. You can watch that first and then understand this part. But what I'm going to teach right now has nothing to do with part one. So, this is what you guys have all been waiting for, which is reactions of acid. This has nothing to do with part one, by the way. So, you guys are good. Those who haven't watched part one, you guys are good. I'm out. I gotta do physics. Kill yourself. Do it. Do physics. When will you be conducting marathon for rate of reaction? Good question. Very good question. Next question. सर कल इंग्लिश का मॉक है. गुड क्वेश्चन. गुड स्टेटमेंट. वेरी गुड स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट. सर कल पेपर है मेरा. गुड स्टेटमेंट. वेरी गुड स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट. सर व्हाई डू यू थ्रेट किड्स? गुड गुड स्टेटमेंट. वेरी गुड स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट. या So if ammonia accepts a proton, which is a hydrogen, shouldn't it gain a negative charge? No, Ramisha, a proton is effectively a hydrogen ion. No? Again, already taught in part one, but see, Ramisha, hydrogen is 1, 1. If you, and 1, 1 means what? It has one proton, 1 minus 1, 0 neutron, and it has one electron. Because for an atom, protons and electrons are equal, Ramisha. So if it has a 1 plus charge, what does that mean? That means it still has one proton because protons aren't gained or lost. Neutrons are still 0. 1 plus charge means it lacks an electron now. So it has 0 electrons. So effectively, a hydrogen ion is a proton, Ramisha. So if NH3 gains a proton, which is a hydrogen ion, shouldn't it become NH4 and a positive charge on it? Because the proton is H plus. So NH3 plus one hydrogen is NH4, and this positive charge goes over it. And you learn more about this, Amisha, in A levels. It's called dative bonding, by the way. Yeah. When will we solve prep? Good question. Very good question. Next question. you know something I've understood something, in my life I've understood this, that everybody is extremely selfish. Again, like I've always said, it's always the survival of the fittest, and every person on the face of planet earth is the most selfish when it comes to themselves. The reason is very simple. Even if you're trying to rage beat me, it's working. The reason is very simple, because everybody wants to just, mera kaam ho jaye, mera kaam ho jaye. Yeah. So everybody wants कि मेरा काम हो, मेरा काम हो, मेरा काम हो, मेरा काम हो, मर मुर जाए बाकी सारे, right? So please understand that. Understand that we are here for a reason. I'm here to answer all your questions, but at the start and at the end, all the other questions should now pertain to acid, bases, and stop salts. Yeah. So stop rage baiting, sir, so I can at least make notes. you know, so real content coming. Sorry, guys. Very good statement. Next statement. Yeah, I can't, sir, but the selfish ones usually win. No, Ramisha, that's absolutely incorrect. If you are good to others, you tell people about, good teachers, you help them in life, you'll realize that Allah Ta'ala is going to help you one way or the other. Even if it's not in terms of grade, it's going to be in terms of, maybe it's in terms of, in monetary terms. Huran is saying, why is chemistry so hard? Maybe because, Huran, you didn't have a good teacher. Don't say you studied from me now. Pata lage agla message, I studied from you, sir, because I have not taught any Huran. Can you show the screen for a minute? The screen is visible. और क्या दिखाऊं मैं? रमीशा सिंह, मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ. रमीशा, आपकी उम्र कितनी है कि ऐसे कभी नहीं हुआ? 16-17 साल आप सबकी उम्र होती है. अच्छा, I think I should now block the chat, right? Because this is getting really difficult because I am very easily distracted by questions. So either I block the chat and move on. I think I should block the chat and move on, yeah? कर दूं? चलो, blocking the chat, guys, because सुधरने वाले तो आप लोग हो नहीं. तो block the chat. It's now host and co-host only. And before I blocked the chat, Aiza wrote 6-7. Awesome, Aiza. Swear to God, you guys are taking screenshots. Okay, great. Now,
Let's talk about reactions of acids. The first reaction is a metal reacting with an acid. Remember, whenever a metal reacts with an acid, it'll always give you an ionic compound which you call a salt, and it's going to give you hydrogen gas. Now, there's a reason behind why this forms. Again, you don't need to rote learn anything. It's a piece of cake. I'll tell you why it's a piece of cake. For example, I take a metal, which is sodium metal, and I reacted with an acid. Let's suppose I reacted with HCl, which is hydrochloric acid. And once I reacted with HCl, do you know what happens? It basically is a reaction which you call a displacement reaction. A reaction which is called a displacement reaction takes place. Now, why does this displacement reaction take place? The displacement reaction takes place because the more reactive metal displaces the less reactive hydrogen, right? Because sodium is higher in the reactivity series. You guys should know reactivity series by heart at this point. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. So please, is potassium, stop is sodium. And instead try learning how copper saves gold. So how is hydrogen? See the difference between sodium and hydrogen? Sodium is right here in the reactivity series, very reactive. Hydrogen isn't that reactive. So what you say is, hey, sodium is higher in the reactivity series. Therefore, it is able to displace the hydrogen of the acid. Therefore, it displaces the hydrogen of the acid. And what does it form? Well, once the hydrogen is displaced, sodium says hydrogen ja. Everybody say it out loud. If you are sitting in your homes, you say it out loud. Hydrogen ja. ऐसे करके hydrogen ja. Scream on top of your lungs so your parents think you guys are crazy. You guys are mentally disturbed, right? They say hydrogen ja. And so hydrogen goes away. And hydrogen, basically, we know that hydrogen alone cannot exist. It can't just be one H that exists in the universe. It has to make hydrogen gas. And hydrogen gas is what? Hydrogen gas is H2. It's not H. Right? So what happens is sodium displaces a hydrogen, forms hydrogen gas. And then sodium forms a bond with this Cl right here. And how does it form a bond? Well, you know that sodium has a 1 plus charge. Cl, sodium will make a 1 plus ion, right? Because if it were to make a salt, salt is basically an ionic compound. Remember this. So how does sodium make an ionic compound with the Cl? Sodium is in group 1. Sodium is in group 1. It will lose an electron, and Cl is in group 7. It'll have a 1 minus charge when it were to make an ionic bond. And so sodium 1 plus, the charges are equal. Therefore, the formula for that is NaCl. And that is, my dear friends, the first equation. I'm not solving the balancing for it yet. I just want you guys to write the equations as of now, please, because I know you guys are very, very weak in just writing the equations as well. Sir, I did hydrogen ja out loud. Now my parents think I'm in a cult and you are the cult leader. Ab kya karu? This is good, Zibal. I love it. Sir, my parents already think that I'm mental. That's even better. Yes, Isa, you're right. I'm gonna look in. I'm gonna tell you that as well. So my parents think I'm crazy now. No, they shouldn't think. They should know. Acha. Now you guys have to solve all the others. Then I'll teach you balancing, right? And you have to solve the equation. You have to write the equation just like I'm showing you, right? Try it on your own. I'm gonna write a couple of equations and then I will solve it with you guys, right? So let's suppose Mg equation number 2 is like Mg plus HCl. Then I'll also balance it later on. But first write the complete the equations. Mg plus HCl. Even one example is enough for you guys to actually be able to solve everything, right? So Mg plus HCl, lithium plus sulfuric acid, maybe like calcium plus sulfuric acid, H2SO4. Then maybe like, please do not, Thunderbolt is here. I want to record this. Apply this permission to all future. Okay, Thunderbolt, you can record the meeting, but I'm already recording it. Thunderbolt, why do you want to record it? I'm declining um, your um, your request. Aluminum plus HCl, then aluminum plus maybe H3PO4, then aluminum plus like H2SO4. I'm giving you guys all different type of examples. Or then maybe like क्या करें, barium plus H3PO4, then like let's do barium plus HNO3, let's do potassium plus HNO3, you know. Any other requests? Hmm? Any other requests? No requests? Chalo, then start solving this.
Start solving these equations. These are all displacement reactions, by the way. Yeah. Oh, it is, Sanjana. And the last equation, I'm going to throw a curveball at you. Copper plus HCl. I'm going to throw a curveball at you right here. And I'm also going to say silver plus HCl. I'm going to throw another curveball at you. Yeah. So start solving and writing the equation. I'll give you 2 minutes to do so, and then 2 minutes to nahi. Chalo, I'll give you 5 minutes. Chalo. These are all the equations. I'm giving you all 5 minutes to complete the equations. Don't balance them, please. Just write the complete equation. I'll teach you how to balance and what balancing is and how balancing is. Blah, 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 blah. I'll teach you all of that stuff in a moment. You'll be able to do everything. Just first be able to write the equation. We'll think about balancing later on. I know a lot of students, they can't even write the equation. That's the problem. In equations, you write formulas, right? So please do it the same in the same format that I've shown you. Apne se Ternelli now, or na, you've done enough experimentation on your own. So do it in the same manner I have taught you, because that'll make things easy and it'll streamline it for you. Yeah. Now I'll cater to questions. Rabia question, good Rabia. Riyan is saying, do you live in Peshawar? No, Riyan, I'm in Islamabad and Peshawar and everywhere else. सर गाना सुना दें, शर्म करें, रोज़े का महीना है. Deemal is saying, I did Haracha, we already answered that. Rubab is saying, aren't you gonna bring your snack? Oh, Rubab, thank you for reminding me. Sir, आज मेरी बर्थडे है, please say happy birthday to me. Kurt Kobe is saying, today is my birthday, please say happy birthday to me. Sure, Kurt Kobe. Happy birthday to you. You were born in a zoo with monkeys and donkeys and elephants too. Pardon me. Great. Yeah. So show your example first. This is my example. This is just one of the equations, right? Welcome, Kurt. Welcome, Kurt. Sir, I am done. Awesome, Rubab. So smart. Done. Sakina saying I'm done. Everybody saying I'm done. I'm done. I'm done. Can I just chalo, I'm gonna write the equations, and then I'm gonna then balance a couple, and then you do on your own, and then I'll complete the balancing, right? So let's move on. Let's move on. Let me just do it. So the same idea we're gonna see. You have a metal here, and you have the acid. Now what's going to happen? Metal will displace the acid. Why will magnesium displace the hydrogen in the acid? Because magnesium is more reactive than hydrogen, and therefore it will displace the hydrogen of the acid. And when hydrogen is displaced, it forms H2. Now the question is, what salt forms? In order to make the salt we know is an ionic compound, and ionic compounds kaise bante hain? By charges. And so what charge should magnesium have in order to make the ionic compound? It should have a charge of 2 plus. Why? Because magnesium is in group 2, and group 2 means it would lose 2 electrons, therefore a charge of 2 plus. Cl is in group 7, and group 7 means it'll gain 1 electron because it's a non-metal. Non-metals tend to gain electrons, so it'll have a charge of 1 minus. And how do you write the formula? See, for one magnesium ion, how many chloride ions do you need? Now there are two ways to do it. Number one way is the way that your teachers make you rote learn things. And please, by the way, this rote learning is good, but it's not that good in order to be able to solve equations, right? So you either rote learn it and say, hey, the formula of magnesium chloride is cross multiply, you get MgCl2. Or the other way to look at it is that the charges must balance each other out. Now magnesium is a 2 plus charge and Cl is a 1 minus charge. And what MgCl2 means, that is it means that for one magnesium ion you need to have 2 chloride ions. Do you know why? Because see, magnesium has 2 plus and there should be 2 minus, but Cl can only gain 1 electron. Therefore you need 2 chloride ions to have effectively one Cl1 minus and the other Cl1 minus, because when magnesium loses 2 electron, it'll give 1 electron to one Cl and it'll give another electron to the other Cl. So the charges must balance out. 2 plus must be equal to 2 minus. And in fact, we have 1 minus here, but there are 2 1 minuses, which effectively gives you a
2 minus, right? So this is how you need to think about it now. Although this method is really good when it comes to quickly writing formulas, but I will not encourage this method right now. Please just follow my lead, right? So I'm going to say, hey, for one magnesium ion, how many chloride ions do you need, sir? For one magnesium ion, you need two chloride ions because 2 plus need to equal to 2 minus, right? So I'm going to say, hey, MgCl2 is the formula. I want you guys to think like this, by the way. You can also cross multiply if you want, but then you should know this idea as well, that 2 plus must equal 2 minus, but this is only 1 minus since it's group 7. So there must be two chloride ions involved. Do keep this idea in your brain because this will help you actually solve and balance the equation. Okay? MgCl2 is an ionic compound. If you think that this Cl2 is because Cl2 is diatomic, you need to revise ionic bonding. Okay. So lithium, now here, lithium will displace the hydrogen of the acid. It's going to give you, I've not balanced it. I'm just writing the equation. I've not balanced anything. It'll give you hydrogen gas because lithium is more reactive than hydrogen in the reactivity. Therefore, acid, right? And then you're going to have to make a salt. Now, how do you make salt? Lithium is in group 1. It'll have a 1 plus charge because it loses 1 electron. SO4, you need to know the charge of SO4, which is sulfate ion, SO4 2 minus. And again, you know that, see, this is 1 plus and this is 2 minus. Now, these charges should balance out. For 1 plus, is 2 minus enough? No. 2 minus means this fella has gained 2 electrons. And how will it gain 2 electrons? If lithium were to give 2 electrons. Now, lithium can only give 1 electron. Therefore, you need to have 2 lithium ions, don't you? You need to have 2 lithium ions. So what should the formula be? It should be you have 2 lithium ions for 1 sulfate ion. Or what you could literally do is the rote learning thing that you have remembered from O-level IGCSE, just cross multiply, you get Li2SO4. Both are correct, but you need to also be able to think like this, that the charges must balance out, because I teach balancing with the help of charges, and it'll help you guys out a ton. Right? So do think like this. Please, I want you guys to think like this. Yeah. Next, calcium. Calcium again, it will displace the hydrogen of the acid. Metal plus acid gives me what? Hydrogen. Why? Because see, metal is more reactive than hydrogen, and therefore in the reactivity series, and therefore it can displace it. It's above hydrogen in the reactivity series. And so when it makes a salt, which salt would it make? Calcium is in group 2, makes a 2 plus ion. SO4 is in group, it's not in any group, but it's a polyatomic ion with a 2 minus charge. Now see, 2 plus equals 2 minus. That's why the formula is for one calcium ion, you just need one sulfate ion, which is what? CaSO4. That's why the formula. A lot of teachers teach it like this, which is absolutely BS. It's bullshit. It's incorrect. They say 2 plus cancels out with 2 minus. Nothing of this sort happens. If you show this formula, if you were to zoom out of this formula, see, this is just a formula, but it indicates that this is an ionic compound. Please, if your ionic bonding is weak, you can't do this, right? So Li2SO4 is literally the formula. It does not mean there are no charges. There are charges. You basically have 2 lithium ions bonded with 1 sulfate ion. That's what Li2SO4 means. Please try to understand that. MgCl2 means you have one magnesium ion bonded to two chloride ions. That's why the formula is MgCl2. It is not because Cl2 is diatomic. Please understand. Next, aluminum is going to displace the hydrogen of the acid. Now I'm going to go quick, okay? It displaces the hydrogen of the acid, forms H2 because hydrogen exists in the form of H2. Then it makes a salt. Salt is an ionic compound. Aluminum is in group 3, loses 3 electrons. Cl is in group 7, gains 1 electron. See, for one aluminum ion, how many chloride ions do you need? For one aluminum ion, see, it has 3 plus charge, which means it will give 3 electrons, but this can only gain 1. So for one Al3 plus, you need to have 3 chloride ions, right? Or you could also just use the rote learning that you've learned, aluminum 3 plus Cl1 minus cross multiply, which is AlCl3. Done. So you're right, AlCl3 right here. That's good stuff. And then here again, then aluminum makes a 3 plus ion. PO4 is 3 minus phosphate. You need to know the charge of phosphate. And see, since the charges are equal, for one aluminum, you just literally need one phosphate. That's what we mean by AlPO4. Or some teachers just say 3 plus cancels out with 3 minus. That's absolutely incorrect. It's BS, but okay. And so aluminum displaces the hydrogen of the acid. Tuck, tuck. Done? Can I go quick now? So why don't you ever feel bad for hydrogen? It's always kicked out. Mustafa, I don't know. Aluminum 3 plus, sulfate 2 minus,
Again, what will be the formula? Now see, aluminum displaces the hydrogen of the acid, and then it gives you H2. And if you were to rote learn what teachers teach you, you can absolutely do that. That aluminum is 3 plus, SO4 is 2 minus, cross multiply, you get what? Al2 SO4, and the 3 multiplies with the entire SO4. But what this effectively means is realize that this means that you have two aluminum ions for three sulfate ions, and that makes sense. See, two aluminum ions means in totality you have a total of 6 plus here, and three sulfate ions means 3 times 2, that's 6 minus. See, for 6 plus you have 6 minus. That's what Al2SO4 whole thrice means, right? So this is Al2SO4 whole thrice. Done, guys. Next 5. Barium. Barium will displace the hydrogen of the acid, gives you hydrogen, because barium is more reactive than hydrogen in the reactivity series. It's above hydrogen in the reactivity series, right? It's going to give you what? Now it's also going to give you the salt. Barium will make a 2 plus ion because it's in group 2. PO4 has a 3 minus charge. Again, cross multiply, what do you get? Ba3PO4 whole twice. See, this is literally it. And what this means is, see, you have 3 barium ions for 2 phosphate ions. That's what the formula means. And see, it makes sense. You have 3 times 2, 6 pluses, for 2 times 3, 6 minuses. How easy is this to understand, guys? Then barium with HNO3. Barium will displace the hydrogen of the acid, forms what? Hydrogen gas. And then BaNO3 is going to form. Now BaNO3, don't write it like this. Always show the charges. So barium will make a 2 plus charge. NO3 has a 1 minus charge. So understand, for one barium ion, you need to have 2 nitrate ions for the charges to balance out. So what we do is we say, hey, for one barium ion, you actually need 2 nitrate ions. Or what you could have done is you could have simply cross multiplied. Hey, you have barium 2 plus, NO3 is 1 minus, cross multiply. So I'm taking these both things simultaneously. Those who are used to cross multiplication, and I know in other than my students, nobody is used to this. But you need to think like this in order to balance equations, by the way. You need to think like this. Huh? Now, again, you have potassium right here. So potassium will displace hydrogen of the acid. It'll form H2 gas. I'm going to start balancing now in a moment. And then once it displaces it, K forms a 1 plus ion. NO3 is 1 minus. It forms KNO3, potassium nitrate. Done. Similarly, copper plus HCl. Copper will displace the hydrogen in the of the acid because it's more reactive than the acid. It'll form what? It'll form hydrogen gas, and copper will have a charge of 2 plus. Cl is 1 minus. Cross multiply, you get CuCl2. Similarly, Ag will displace the hydrogen of the acid. It'll form H2, and Ag has a charge of 1 plus, and Cl is 1 minus. Cross multiply, you get AgCl. And look, Dumbo, jumbo, mumbo, whoever has done this, kill yourself, hang from a ceiling. Do you know why? Do you know why? Because copper is not more reactive than hydrogen in the reactivity series. That's why when I say to remember the reactivity series by heart, you guys don't. And that's where you guys fumble. This reaction will not take place. There is no reaction, no such thing as this, no reaction. Do you know why? Why is there no reaction? Because copper is not more reactive than hydrogen. It says, please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves silver and gold. That's why if you take silver and place it in acid, your mom might think you're burning her silver jewelry. Please don't do that because there's also impurity involved. But if you take pure silver or pure gold and you throw it in acid, nothing is going to happen for your O-level IGCSE course, right? But if you do it, something will happen because there are impurities involved as well. Make sense? So understand that these reactions will not happen. The reason the examiner normally asks, you say, hey, hydrogen or copper is below hydrogen. Copper, silver, gold, they are below hydrogen in the reactivity series. That's why it cannot displace it. That's why it does not displace it. I hope it makes sense, right? Now it's time for balancing. Acha, how do we balance now? How do we balance? Jimal is saying, I said this beforehand.
Vimal, wow, do you want a cookie for it? No, I'm joking. Vimal, I'm sorry. I'm mentally unstable. I am mentally unstable, and that's true. I'm sorry if I'm like this. When will the class end? Rabia, whenever I want. Sir, what if the equation is already given? Then we just have to put the charges. Yes, just think about it like this. Now, even if the equation is given to you like this, even if this entire equation is given and you want to balance it, I'd want you guys to split it into charges for yourself. Okay, BA has a 2 plus charge, PO4 is 3 minus, something like this. Because I'll teach you now how to balance. I teach you guys how to balance right now. Can you repeat the bracket thinking? Please watch ionic bonding and chemical bonding marathon, Saha. Please watch the chemical bonding marathon because this is not the time to ask these things. You can DM me, I'll try, but they can't. You guys have, acha, I have a question. I'm giving you guys and offering you guys free marathons. They are present on my YouTube. I also have paid lectures. You can also opt for that. Why don't you guys put in some more effort or go for my recorded lectures which are present on my portal since I've already taught the class, the session is already over. Or you could just go on to my YouTube whenever I'm telling you, please do, please do, please do. You've been paying these goddamn schools for the past 5 6 years now, or 3 years when you count O level IGCSE, or in some schools it's 2 years. 2 years every month you guys have been paying 30,000, 40,000, 50,000. Can you guys calculate the amount of money that you've given these schools? It's about, roughly speaking, it's 45,000 a student nowadays, maybe 30, 35,000, but I take 40, chalo. I take 40 as the average. So 40,000 multiplied by 3 years. So 3 years have 12 months in it. It's about one is three, it's 1.4 million. You've paid about 15 lakhs, 1.5 million roughly. You've paid these schools over the past 3 years. Why aren't you guys putting in more effort? Yeah, I am giving you guys free things. I'm giving you the free recordings, free recording to khaya nahi, but free marathons. You know, Miss Naiba is accommodating every single student who has a financial crunch. She's coming up with payment plans for students. She's coming up with a lot of things. Why aren't you guys putting in more effort, guys? You're gonna waste 1.5 million rupees. It's on you. And then I'm not taking into account the money that goes to Cambridge. वो भी कोई 2 3 लाख रुपए है. It's up to you guys. It's up to you. Seriously, it's up to you. I'm not opening all chat, Hamza, because you guys have proven your worth. Sorry to say. But that's the thing. So you haven't uploaded some of the O-level lectures onto YouTube because Rubab, sorry, Rubab, I know that was harsh. I'm sorry, guys. Please, कान पकड़ लूं क्या करूं? Sorry, that was harsh. I'm sorry. I'm sorry, Rubab. But yes, Rubab, I have some of my O-level lectures on YouTube, but some aren't present because they are part of the recorded batch. Na? Then why would students watch the record? But फिर भी students देखते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. But still, it'll be unfair to those students if I just upload everything onto YouTube, right? They'll start to kill me then. Mustafa Singh will have to stabilize you with electrons. That's true. That's true. Yeah. Because once it happened to me in 2022, I did something like this. Students killed me. Some people are slow, sir, but please increase the speed. No. Sir, why are you ignoring me? Fari, because you were just asking me, sir, follow back, 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 and I want to teach acid bases and salts. Just message me, student. Follow back. एग्जैक्टली ऐसा फ्री चीज़ों की कदर नहीं होती दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू इफ फ्री चीज़ों की कदर होती यू गाइज वुड एक्चुअली बी स्टडिंग राइट नाउ लेकिन नहीं होती इसीलिए तो स्कूलों को यू गिव अबाउट 1.5 million in a span of 3 years and then you give Cambridge about 3 4 lakh रुपए over the course of your O level IGCSE so about 2 million 20 lakh रुपए just in 3 years. Damn, that's some money. Money, 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 money. Dollar, 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 dollar. That's what these school institutions, principals, and owners think then. Not principals, but the owners. Normally, the principals are the owners. Normally, they have some sort of stake. But that's what happens. If you want me to follow back, just message me, student. I'll follow you. I'll follow you back because I have a lot of requests pending. Mr. Papala. No, I'm joking. I'm not that popular, but still, I have a lot of hundreds and hundreds of requests. So just message student in my DM, and I only follow from my personal account. So I'll follow you back. Just message me on Instagram, student.
I will follow you. I will accept your request. Just message me that. फिर आपको डोनेशन ज़कात देनी है? नहीं, हाँ हाँ, आई गिव डोनेशन ज़कात टू माय क्लोज पीपल। बिकॉज सी, पहला हक आप पे होता है आपके रिलेटिव्स का, गरीब जो रिलेटिव्स आपके, उसके बाद पहले भाई बहन का होता है, फिर रिलेटिव्स का होता है, फिर आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, तो ठीक है। मतलब आई सेंड यू 4-5 हज़ार रुपए मैसेज में भेज देता हूँ, बट स्टिल यू नो सही है, चलो सही है, चलो मैं भेज देता हूँ। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ नोबल कॉज, मैं भेज देता हूँ। मैं वैसे भेज रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स मुझे भेज देते हैं, मैं भेज देता होता हूँ। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड, अब मुझे मैसेज आए सर 10 लाख रुपए दे दे। सर आप महीना बाद रिप्लाई देते हैं, चल सॉरी, योर अकाउंट इज प्राइवेट, फॉर यू कैन स्टिल मैसेज। बैकग्राउंड खौफ है, मतलब हम अभी, आई डिसेबल्ड द ऑल चैट, आई डिसेबल्ड द ऑल चैट एंड चैट इज चैटिंग इन द डीएम्स। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है जीमन, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी स्टॉक करूं, पोस्ट टू जी 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 जी। यू गाइस आर नॉट important, आई एम जोकिंग, you guys are the love of my lives, but that my lives, because I am a cat, I have 9 lives. Rubab is saying, can we proceed further? Rubab, I don't think so. Because these guys aren't letting you guys proceed further because they are done with the course. I think a lot of these guys are here to just chit chat with me. Can we just can I just balance this equation for you guys? Can I just balance this equation for you guys, please? Can I balance this equation? Please, if you guys give me the opportunity to do so. Please, please, guys. I'd love to balance the equations. Because Baki, all of you are done with your course, maybe. Hamza is saying, send me 2000 rupees. Okay, Hamza, send me your account. Organic chemistry stream, Rohel is already uploaded. Moles is already uploaded. Everything is already uploaded. When will you change your background? I don't know. I have. Now let me teach you guys balancing. देखते जाएं. Look at the smarty stuff. Now, if you look at the second equation, I don't want to discuss the first equation. Remember, what you will always do is you will balance hydrogen at the end. Balance the right hand side hydrogen at the end. And there's reason to it, because this is something you can manipulate. This is something you can manipulate. It's alone, and you can manipulate whatever is alone. Whenever you're stuck in a balancing question, think what is alone, and whatever is alone, you balance that at the end, because that's easier to balance. You can manipulate anything and everything in that, right? Now let me teach you how you balance. Dekhiye, you took magnesium, it displaced hydrogen, formed H2 gas, and you also wrote the salt. Now see, for one magnesium ion, how many chloride ions do you need? Shabash. Ab bataएं. For one magnesium ion, how many chloride ions do you need? Even you can even look at the formula. For one magnesium ion, how many chloride ions do you need? This is how now you need to think. I'm going to open everyone chat because I can't open everybody's DM, but please answer in the everyone. For one magnesium, see this is 2 plus, you need 2 minus, right? But chloride was 1 minus. So for one magnesium ion, you need how many chloride ions? You need 2 chloride ions, don't you? And because you need 2 chloride ions, you are adding the 2 on your own. This 2 is going to fall right here. How easy is this balancing? So automatically, the moment you do this, these three things are balanced now. The moment you do this, 1, 2, 3. These three things are automatically balanced. The moment you do this, and then you just balance the hydrogen. So you say, hey, you have 2 hydrogens on the left, you also have 2 hydrogens on the right, and therefore I don't need to add anything else, and this is also balanced. Next, lithium has a charge of 1 plus, sulfate is 2 minus. Now for one sulfate, and see this is 2 minus, you only have 1 plus. Can you guys tell me, for one SO4 2 minus, how many lithium ions do you need? I need what? I need 2 lithium ions, obviously, don't I? So because I'm adding a 2 here, I'm just going to pick this 2 up and add it right here. And see, these three automatically become balanced. Automatically. 1, 2, and 3.
How do we name salts? Watch moles and stoichiometry video. This is not a naming class, Rabia. Moles and stoichiometry. I've taught moles and stoichiometry marathon में मैंने पढ़ा है how to name salts. This is called lithium sulfate. When is it sulfate, sulfite, sulfate, sulfite, sulfide, sulfurous acid, sulfuric acid, all of that stuff? I've all taught it in moles and stoichiometry. This is just balancing now and reactions, right? And then you just balance the hydrogen at the end. You have two on the left, two on the right, so automatically this guy is also balanced. Next, see, calcium is 2 plus, sulfate is 2 minus. For one calcium ion, how many sulfates do you need? Only one. Therefore, automatically these three fellas are balanced because I don't need to add anything on my own. And then just balance the hydrogen. You have two on the left, two on the right. Done. Next, next. For one aluminum ion, how many chloride ions do you need? See, now you guys can think like this. For one aluminum ion, how many chloride ions? See, this is 3 plus. This is only 1 minus, right? So for one aluminum ion, how many chloride ions do you need? And you can even look at it from the formula. See, for one aluminum ion, you need 3 chloride ions. So I'm going to add a 3 here, right? And then you balance out the hydrogens at the end. So automatically, these three fellas are now balanced. 1, 2, and 3. And then you balance out the hydrogen. Now you have 3 hydrogens on the left. You only have 2 on the right. Now here is where some mathematics come into play. You say, hey, I have 2 on the right. I have 2 hydrogens on the right, but I need to have 3 on the right. So what should I multiply 2 with? I'll call it x. What should I multiply 2 with to get 3? This is elementary level math, isn't it? What should you multiply 2 with? You already have 2 here. What should you multiply 2 with to get 3? 2 times x is 3. X, 2 is being multiplied here. It'll go divide there, right? Or divide 2 on both sides. X equals 3 over 2. And you just add 3 over 2 here. And if you don't like fractions, you can further multiply the entire equation with 2 to eliminate this fraction. So then you'll have 2 aluminum, 6 HCl, 2 AlCl3, and 3 H2. Yeah, great. Guys, if you want to talk about your schools, which school you're from, which school you're not from, sir, why are you so underrated? I don't know, Rabia, you tell me. Why is it so hard to memorize solubility rules? Any way to memorize? Rubab, watch my. Oh, I haven't taught that yet. I'll teach it as part of this marathon. You can either purchase my lectures and watch the NACSAG rules that I've made students remember. It's very easy. Preparation of salts also done. If I get to be done with this entire thing, after this I have to teach you solubility rules and then I'll teach you preparation of salts. But if I can't get this over with, then you guys are cooked effectively because I am tired now. So I think I won't be going any further than this for today at least. So we're just done with one of the reactions. There are 5 reactions and they're balancing. So it's up to you guys. The more you make me talk, the less you get the output. Yeah. So I'm going to do all of that, but it'll take time then. If you guys let me talk and let me teach, I can do it. Yeah. So I think I should once again, I should block the chat because people are talking about Dadi, people are talking about when will I see the marathon, when will this happen. Iman will all be posted. Iman will be posted onto YouTube. Don't worry about it, huh? Somebody saying 6-7. So I think I should, वो नहीं होते लातों की बूथ बातों से नहीं मानते. So you guys are laton ki booth because some of you guys, this is unfortunate. That's why I say we are all selfish. I just wanna, because chemistry ho jayegi, yaar. Nobody's gonna ask you what grade you're gonna get 10 years from now, 20 years from now, right? But there's something I notice as human psychology. This is part of human nature. When students they have good preparation, they will never let the other students learn. Never ever. They're going to distract them. They're going to do anything and everything in their ability to distract the other students because they think somehow that if I distract the students subconsciously, they might not think it consciously, but subconsciously they're like, okay, if this student is distracted, the grade threshold will go down. He'll do a bad paper. That'll help me. This is how the mindset works for a lot of students at this point, unfortunately. That's why I am also not that famous at this point because I think I'm by far the best chemistry teacher, not just in Pakistan, but in the entire world. Alhamdulillah, because I put in the effort. I give challenge to every single teacher.
Who teaches AS or O level at IGCSE? But the problem is that students gatekeep me. Do you know why? Because they think that if I'm not gonna tell anybody about sir, okay, I'm gonna learn from him, I'm gonna get my ace and da 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 and good stuff. Vanya is saying I didn't understand the fractions. Can you explain it again? Vanya, it's pretty easy. See, this is just a piece of cake. I balanced these three, and then at the end I balanced the hydrogen. How? I said you have three on the left, and I said at the end always balance the hydrogen. So you had three hydrogens on the left, you need three on the right, and it's just basic, I think, grade one level math where you say, hey, what should I multiply two with to get three? X equals 3 over 2 because this 2 divides there, and that's what I wrote. And then I said if you don't like fraction, multiply the entire equation with 2, so you're going to get 2 aluminum, 6 HCl, 2 AlCl3 and 3 H2. That's up to you if you want to remove the fraction. That's just basic fraction. My teacher said don't use fraction, tell your teacher to kill themselves. No problem, Anya. Next reaction, please. Sir, I kid you not, I struggled so much with some topics since '01 and then I found your lectures. Thank you, Rabab Kushro. Sir, bye bye. Baba is mad at me. I don't know why. It's good that he's mad at you. Can we write 1.5 instead of 3 over 2? No, try to write 3 over 2 instead of 1.5. You can do that, but in A levels. Don't write it here. Okay. Now I'm gonna close the chat again. So, hosts and co-hosts only. Next equation. Aluminum aluminum reacts with H350. Now you can even see that for one aluminum ion, one phosphate ion is right. And you can look at the formula even. For one aluminum ion, you just needed one phosphate ion. Hence, we don't add anything here and automatically these three fellas are balanced. I don't have to do anything here. Then I balance the hydrogen at the end. You see, for one aluminum, one PO4 is required. So nothing, I add nothing. You can just add one and one here if you want. And then I balance hydrogen at the end. You have three hydrogens on the left, you only have two on the right. So what should I do with this right hydrogen? What should I multiply 2 with to get 3? X is equal to 3 over 2 right here. And then if you don't like fractions, you can multiply the entire equation by 2. Yeah. Sir, when are you conducting the past paper session? The past paper session live is going to start from 1st April, but there are about 100 papers already present. That's why we made the past paper portal live from the 5th of March. So you can purchase the past paper portal for 2 months or 3 months, however much you want. Because I'd recommend starting the yearly practice with me from now. So you can talk to Miss Naiba and she's going to give you the access to it if you want. तो आप उधर से उनसे purchase कर सकती हैं. Because I think even if you do my yearly papers and you just have weak chemistry basics, just do the papers with me, your chemistry is going to get really strong, because the way I solve papers is not just to just give you answers. I revise all your concepts by solving papers. Somebody sending me 88 messages. Who sent 88 messages? Aiza Khuram. 10 years pp practice is good, even 5 years is good, Aiza, but it depends on how you're doing it, Aiza. So I think you should just, like, I've done 2024 set, 2023 set, some of the 2022 papers, some of the 2021 papers, and I'm going to also do the 2025 set with you. There are about 100 papers at least. So I focus more on the quality. Like if you just do my papers, they are not even 10 years. They're about 3-4 years, but they are multiple variants, every single variant, every single time. So they'll revise your concepts in a better manner. Yeah. Okay. Let's solve the other, let's balance all the other fellas. So this is just one equation that I balanced. And by the way, you can use all of this to balance everything. See here, what does this mean? It means you have two aluminum ions for three sulfate ions. So can I say, hey, you need to have two aluminum ions for three sulfate ions? Just by the formula, I can quickly do this. See, two aluminum ions for three sulfate ions. That's what it means. Look, 2 times 3 is 6. Right here, 2 times 3 is 6 plus. 3 times 2 is 6 minus. So 2 aluminums for 3 sulfates. And now you just balance out hydrogens. 3 times 2 is 6. And what should you multiply with 2 with to get 6? X is equal to 6 over 2. That's 3. That's it. This is in fact one of the most difficult equations that Cambridge has said to have ever been tested. What's difficult about this shit? It's a piece of cake. Next. Barium reacts with H3PO4. See, again, now you actually know what this formula means. What does this formula means? They aren't just a bunch of numbers. This means that you need three barium ions. You need three barium ions for two phosphate ions.
So what that means is, hey, 3 barium ions are needed for 2 phosphate ions. That's why 6 plus equals 6 minus. And you just insert the 3 here and you insert the 2 here. That's all. And then in the end, you just balance hydrogens. 2 times 3 is 6. And you say, hey, what should I multiply 2 with to get 6? X is equal to 6 over 2. That's 3. Done and dusted. अब इसमें और मैं कितना आसान करके बताऊं? सर पढ़ाई नहीं हो रही, टिप्स राबिया, वॉच माय टिप्स ऑन यूट्यूब. Yeah, I'm getting hungry. Yeah. Sir, aren't past paper portal in our portal? No, they were just topical. Thunderbolt, you can get the yearly from Miss Naiva. सर कितनी क्लास रहती है? सर ड्रेन की स्ट्रीम है. बेटा अब जाओ मैथ पढ़ो. मैं तो बस 10 मिनट में ख़त्म करने लगा हूँ. सर अगर कुछ भी सिलेबस कवर नहीं हुआ तो फिर ईयरली परचेज करें. रमीशा, इट्स इम्पॉसिबल कि अगर आपने बिल्कुल एक लफ्ज भी ना पढ़ा हो, राइट? मतलब कुछ तो आइडिया होगा ना, कुछ तो आपको पता होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, क्या ये नहीं है, यू नो. सो इवन दैट इज गोना हेल्प यू. जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ सॉल्विंग द ईयरली पेपर विद मी. जिस देर फिर आप फंसती हैं तो उसको रिवाइज करें. It's already been 2 hours or 1 hour. When will this chapter end? Fatir, at the pace that we are going, maybe it ends in the next 5 days. I can finish this in one day, one single day. I could have finished this in 1.5 hours. Taught you guys all balancing, all NACSAG rules, all solubility rules, how to prepare salt. But since you guys are making me talk a lot, I can't. Can I? So, next. Barium plus nitric acid. Now again, see, even the formula is telling you for one barium ion, you need two nitrates. So see, for one barium ion, see, you're needing two nitrates. That's why I'm adding a 2 here. And see, you have two hydrogen. Automatically, these three are now balanced. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Boom, back. See, boom, back, boom. And then you have two hydrogens on the left. You already have two hydrogens on the right. Done and dusted. Now, again, for one potassium ion, you need one nitrate ion. So it's just one, one, one. Already everything is balanced. Just balance out hydrogens. You have one hydrogen on the left, you have two on the right. So what should I multiply 2 with to get 1? Now I need 1. X is equal to 1 over 2. 2 is just divided on the right hand side or divided by 2 on both hand sides. And if you don't like fractions, you could multiply this entire thing by 2. And then obviously these reactions don't break this. So you've effectively learned how to balance the equation of displacement reaction, which is metal plus acid gives you salt and hydrogen gas. And by the way, you can balance every single equation with the same method because I've actually given you guys a thought process. But again, I will cover every single equation with you. I've done almost all the examples of metal plus acid. This is all what can come in your exam, right? So that's all. And I will discuss all the other reactions of acids with bases, with metal oxides, metal hydroxides, metal carbonates, and how to balance all of those. It's the same idea, but I want to do all of that, but not in this class because I'm tired now. Inshallah, in the next class. Any other questions now? Now you guys can fire your questions towards me. We covered very little today because of these questions. What to do for MCQs? Again, watch my guidance videos for MCQs. वॉच टेक माई पास पेपर. मतलब मैं तो आपको कहूँ मेरा पास पेपर पोर्टल ले लें, उसमें सब कुछ मैंने किया हुआ है, आपको समझ आ जाए कि एमसीक्यू कैसे करें. सर आज ख़त्म करें हमजा, नहीं हो सकता आज यार. इज देयर टाइम टू डू टॉपिकल एंड ईयरली बोथ? अभी साहा, आई वुड रिकमेंड इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वीक देन स्टिक टू फर्स्ट डूइंग टॉपिकल्स एंड देन डू ईयरलीज. Sorry, sir. अब लॉक इन करते हैं. Zimal, now the time is over. You know when sir, what is your Instagram ID? Ayub, I would have told you, but now you've left. Now I'm gonna open everyone chat. अब करें जितनी बातें करनी है. I've done with the class now. Sir, YouTube पे लगा दूंगा. Sir, we make you talk a lot. You get clips for Sir Sully Core. It's not just that, guys. Your time is more important than my time at this point in time. See, that was also rhyming. Your time is more important than my time at this point in time. Yeah, so very important. Very important. You need to realize this. I can't finish it today, Hamza. It's gonna take me 2 hours, 3 hours now. बस मेरा momentum टूट गया आज के दिन के लिए. So can I know what grades you got in O levels? No, I got U's. Sir, motivation चाहिए? Watch my motivation videos onto YouTube.
एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, सिर्फ ना एक एक फोन उठाना है, एक यूं करना है और एक क्लिक मारना है, भाई यही है। हाँ, लो जी क्या होता है, लो जी नहीं, सर खाओ जी। जी हाँ। चलो जी, मर मुर जाए नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको लंबी सेहत दे। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जाके ना, सर यू साउंड पंजाबी, नो आई एम ऑल्सो अ पंजाबी, आई एम ऑल्सो अ पठान, आई एम ऑल्सो एवरीबडी, ذا بختونميم ذا بنجابيميم. أنا أتكلم في اللغة العربية ولكن أنا أتكلم قليلا جدا. آم، هل تتكلم في اللغة العربية؟ هل تتكلم في اللغة العربية؟ أنا سنذهب إلى الحمام، ولكن أنا لست أتكلم في الإنجليزية because you guys are gonna laugh. Yeah, I can also speak Arabic as well. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ लोग हैं आजकल, ਜਿਹੜੇ आजकल लोग हैं तो बस यही इतनी पंजाबी आती है, मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती। फिर एक आधा स्टोरी टाइम हो जाए। अच्छा चलो, एक स्टोरी टाइम कर लेते हैं, मैं जो है ना चिप्स पकड़ूं, आप लोगों को मैंने कहानी सुनाता हूँ, भूत की कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, भूत की कहानी करते हैं आज, है। भूत की कहानी सुननी है आप लोगों ने? मनहूसों पढ़ लो पढ़ लो, भूत की कहानी सुनाए, जी जी सर, पढ़ लो, मर मुर जाओ कहीं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे सबको, लेकिन क्या मतलब, वहां कहानी सुनाए, कहानी, रुको मैं चिप्स लेके आता हूँ, सुनाता हूँ कहानी, कहानी अच्छी है। रुको रुको, अल्लाह रब्बी। चलो जी, आप मुझे कहानी सुनाए अब। बोला ये क्या खुल गया, ए लेवल्स की क्लास खुल गई है। ना यू गाइस टेल मी कहानीस, बताएं जी, बताएं। आप लोगों को मैं चैट अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूँ, मौका। गाइस कोई स्केरी स्टोरी किसको पता है, मुझे सुनाए जिसको स्केरी स्टोरी पता है, स्केरी स्टोरी, रेज योर हैंड, मैं आई गिव यू गाइस द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, और फिर सुनाए। प्लीज, स्केरी स्टोरी में ये नहीं होना चाहिए मैंने एक भूत देख लिया और हा 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 हा, नहीं। किसको पता है, रेज योर हैंड, आई गिव यू दी माइक। सबको सुनाए स्टोरी। शाबाश, चिप्स ले आए सारे, चिप्स ले आए, पढ़ाई तो आप लोगों ने वैसे भी नहीं करनी ना, चिप्स ले आए, चलो कुछ तो कर ली जिंदगी में, चिप्स खा लें। सर आपके पास भी, कहाँ से, मेरी मिस नायबा को कांटेक्ट करें, रफ़िया, मिस नायबा को कांटेक्ट कोई भेज दे एवरीवन चैट में, इट्स +923181772015। अभी तो मैंने उनका नंबर भी याद कर लिया। जी बताइए जी, कहानी सुनाई। आदाब इरशाद, किसी के पास कहानी है? अब सारे चुप हो गए हैं, सर स्टोरी है, किधर है, बोलो, किसके पास है? बोले यार, कोई स्टोरी सुनाए। Robab, you have story time. Let's give Robab the mic. Okay, Robab, I'm giving you chance to unmute yourself. Robab, I can't hear you. Robab, it'll take you a hell of a time if you type. मैं ना एयरपॉड्स पहन लेता हूँ, रुको रबाब। चलो जी, रबाब इरशाद, it's gonna take so long for you to type, रबाब just speak. रबाब सिंह अनम्यूट नहीं हो रहा, रबाब वेट, I'll give you the chance to unmute again. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रबाब पढ़ना तो आप लोगों ने वैसे ही नहीं है, तो चलो कहानी ही सुना दें। नहीं सर, मैं पढ़ रही हूँ, कल मैं P6 सर। अच्छा चलो चलो चलो, हम सुन रहे हैं, रुबाब क्या कहानी है, बताएं। सर मेरे बाबा कश्मीर में होते थे, और वो एक मदरसे में पढ़ते थे कुरान पाक, और हम्म। वहां पे उनके साथ जिन्नात पढ़ते थे। और एक दफा जी सर, ठीक। लिटरली उनके साथ एक दफा ये हुआ था कि लाइक, जो आपको पता होगा मदरसों में जो कारी साहब वगैरह होते हैं वो मारते भी हैं एंड स्टफ। हम्म। तो उनने एक दफा लाइक बच्चों को मारा था, और जिन्नात ने ना नमाज पढ़ते हुए एक बड़ा सा डंडा लिया था,
जिस डंडे से वो बच्चों को मारते थे, और वही डंडा कारी साहब की जानमाज के नीचे दे दिया था। और जब वो लाइक सजदे में गए थे, तो उनके घुटने उस डंडे के साथ लगे थे, और उनके लिटरली टूटने वाले थे घुटने। डैम, इसकी ये तो अच्छे जिन थे यार, ये तो कई साहब को मतलब ये तो शायद सर ये नहीं वो भिजवाए थे। सर वो अच्छे जिन्नात थे, पढ़ने वाले जिन्नात थे, अनलाइक अस। गुड स्टोरी, गुड स्टोरी। आई लाइक इट रुबाब, और बस ये और स्टोरी थी। और वो और वो अक्सर ऐसे करते थे कि जब मदरसे में जो हाफिज होते थे बच्चे, वो सो रहे होते थे, तो उनके ऊपर सर्दियों में कंबल उतार के पानी गिरा देते थे। ये अच्छे थे यार, ये तो फिर अच्छे काम करते, कई साहब को पकड़ के ना लिपटर मारने चाहिए थे ऐसे कई साहब को। सर यही एग्जैक्टली यही होना चाहिए इस टाइम के कारी साहब के साथ, अब्यूज जो करते हैं। चलो, गुड स्टोरी, गुड स्टोरी। रुबाब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। ये तो अच्छी हुई ना, कोई डरावनी स्टोरी हो। किसी और से पूछते हैं। हाँ जी, किसी बार कोई डरावनी स्टोरी है, आप पूछिए। सर, वो योर वर्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ही अब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मजाक कर रहा हूँ। जैनब को अनम्यूट करने का मौका देते, पढ़ना तो वैसे भी नहीं है ना, गप्पी लगा देते, मैं भी वेला हूँ। जी जैनब, आई गिवन यू द चांस टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट। Okay, so this is necessarily not really scary, but बाबा के साथ एक बार छोटे होते हुआ था। हम्म। um बेसिकली हुआ था, बाबा बता रहे थे कि वो मस्जिद से लाइक बाहर आ रहे थे, रात का हम्म। टाइम था, और वो हम्म। कह रहे थे व्हेन ही वाज वॉकिंग उनको ना पीछे से आवाज आई, समवन वाज लाइक कॉलिंग आउट हिज नेम, एंड बाबा हम्म। डिड नॉट टर्न अराउंड बिकॉज उनको पता था कि वो अकेले हैं, कौन उनका नाम लेगा। But then he like turned around and there was this like women standing there, और सिर्फ उसके पाँव उल्टे थे। बाबा ने Damn. कहा कि I could not breathe. I just ran out of there. I went home and I started to cry to my mother, like basically my daddy. And my dad didn't go to like masjid for like 5 days then. That's pretty much it. Damn. Damn. नेक्स्ट की कभी यार, ये बड़ा डर लगता है आपको ऐसे ना, अपनी आवाज आती है, मुझे भी कभी कभार आती है ऐसे, सलेमान ऐसे करके आ रही होती है। मैं भी कभी कभार डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ, इन योर फेस यो, आई हैव माय स्टूडेंट्स विद मी बैकिंग मी अप, यो यो हनी सिंह, यो व्हाट्स अप है। मैं ना फिर है, वैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और किसी और के पास है कहानी? You have one, Hanya has one. Hanya, here you go. Ask to unmute. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हानिया। सर ये मेरे बाबा की स्टोरी है, because like it's very old। जब हम्म। मतलब शादी नहीं हुई थी एंड ऑल दैट, तो गांव में, हमारा गांव लाइक मर्दान की साइड पे, राइट। तो हम्म। वो लाइक जो हुजरा होता है ना, तो वो अबाउट इट वाज लाइक 1-2 a.m। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ हुजरे में थे एंड लाइक वो दरवाजा बंद था। तो बाबा हम्म। स्टोरी बताते हैं कि लाइक वहाँ पर खुला मैदान था ना, तो उसमें कमरे भी ऑब्वियसली होते, तो ये सारे कमरे में थे। और मैदान में ऐसे लग रहा था कि बाबा कहते वो घोड़ा नहीं भाग रहा होता, वैसी हम्म। आवाज थी। और फिर वो लाइक आधे घंटे के लिए वो आवाजें चल रही थी। और उसके बाद ऐसा था कि फिर वो दरवाजे पर बहुत प्रेशर आ रहा था, जिस रूम में वो थे। तो आर लाइक 5 to 8 men हुए थे, और उन्होंने वो दरवाजा सही पकड़ा हुआ था कि वो खुले ना। तो ये हम्म। बाबा स्टोरी बताते हैं। Nice. Scary Yeah. man. Scary. These people, these, आपको पता है जब आप इनके बारे में बातें भी करते हैं, तो ये आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं। और रमजान भी है, देख रहे हैं सारे। अपना अपना देख लो भाई, अपना अपना देख लो। मेरे पास तो ग्लॉक पड़ी हुई है साथ ही, अपना अपना देख लो। अच्छा, और किसके पास कोई स्टोरी? और किसी के पास कोई स्टोरी? अपना अपना देख लो बेटा, मैं किसी को नहीं बचा रहा। आज रात सारे अम्मी अब्बू के साथ सोएंगे। यार मैं ऐसे में चिप्स खा रहा हूँ ना, तो आप लोग सुनाते जाओ, मैं फिर चिप्स खा के बताता हूँ। माई टर्न, जिमल्स टर्न गाइस, जिमल्स टर्न। और जिमल, जिमल आई एम गिविंग यू चांस टू अनम्यूट। Hello, Assalamu alaikum everyone. So वालेकुम this is सलाम। not my story but my sister, तो वो अमेरिका में रहती हैं, तो ये जो जिन थे ये थोड़े से फॉरेन जिन थे। अच्छा। गुड 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 गुड, जिमल अच्छा ओके, अच्छा अच्छा। सो उन्होंने अपना घर चेंज करना था एंड दे शिफ्टेड एल्सवेयर। वहाँ का रेंट बहुत लो था। अच्छा। सर उनकी बच्ची है 4 साल की। शी जस्ट हम्म। लर्न हाउ टू लाइक स्पीक एंड ऑल ना।
So Hmm. they saw her in the corridor speaking to somebody, Hmm. like as in a friend, a child friend ना. Oh, अब damn. वो एक दो दिनों बाद वो अपनी माँ के पास आती है, कहती है मामा ये मेरी फ्रेंड से मिले, and the mama couldn't see shit. That's Oh scary. my god. That is And scary. I think after the first month they left that house, क्योंकि और भी थोड़ी चीजें होती थी, खिड़कियां हिलना, बेड Oof. हिलना, ये सब नॉर्मल चीजें. So Yeah. I believe कि वो यही बच्चा जिन होगा or whatever. लेकिन This हाँ, is crazy. बच्चा तो मुझे नहीं लग रहा बच्चा जिन्हें. mama meet my friend, oh my god, I would have left my child over there if I was my sister. I would have left everybody. I would have killed myself. ये बहुत की. You know, one of my मेरी कजन है छोटी. उसने भी ना ये जो बादशाही मॉस्क नहीं है ये लाहौर में इसके साथ अंदर वो कमरे भी हैं जिसमें वो ना वो उधर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार इसमें अंदर वो कमरे हैं जिसमें वो आपको आर्टिफैक्ट्स और ये म्यूजियम और हिस्टोरिकल चीज़ें खाते हैं अब वो उसका नाम अशबाल है ना हम उसको अशु मामा कहते हैं तो वो अंदर गई अब वो उधर देख रही है और वो भी यूके यूके से आई थी अम्मी उनको दिखा रही थी कि यार पाकिस्तान का कल्चर है ये वो छोटी बच्ची है वो से कहती है कि मॉमी वो आगे से देखती है कि क्या है वो दो तीन दफा कह रही आगे मेरी खाला पूछती कि क्या हो गया यार क्यों तंग कर रही हो पश्तों में कह रही ना ये वाई यू अनोइंग मी अशबाला वॉच दिस लुक एट दीस थिंग्स ये चीजें कहते हैं but mommy the lady in the green dress is waving at me and she's smiling मैं मैं तो भागा मैंने कहा आप जाने आपकी बच्ची जाने सब कुछ जाने मैं गया जी सॉरी अपना अपना देख ले and then oh my god and then she was like which lady she there she is can't you see her she's smiling at me mom भाई मेरी उस दिन जो फट गई थी मैंने कहा गया भाई मैं गया नहीं मैं रोया नहीं था रो बाप अब इतना भी नहीं है अब थोड़ा रिलैक्स करें मैं रोए थे सर आपकी नहीं मैं तो मैंने कहा बेटा सॉरी अपना अपना ओवरसीज को आराम नहीं आते सही बात है यार ओवरसीज सारे ये कौन सी हॉरर स्टोरी थी ये बस स्टोरी थी और क्या इवेंट था ना अब क्या करूं तो वो हैवी हैवी किस्म की स्टोरीज थे गाइस किसी और के पास कोई स्टोरी है कोई अच्छी सी हम अभी तक अच्छी स्टोरीज थी वैसे कोई और कोई लंबी स्टोरी सुनाए मेरे पास बहुत मुझे मेरे पास बड़ी स्टोरीज है लेकिन पहले खाना तो खाऊं सारे वेले बैठे हुए हो सुबह ऑफिस में नहीं जाना है आयजा आयजा के साथ स्टोरी है आयजा आयजा किधर है आयजा लेट्स सर्च आयजा हियर यू गो आयजा आस्क टू अनम्यूट अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आयजा अच्छा, ये भूतों वाली नहीं है। इट्स लाइक कि भूत नहीं थे, लेकिन ये मेरे मामू के साथ हुआ था जब वो लाइक हासिलपुर जा रहे थे अपने गाँव। हम्म वो लोग हासिलपुर ना बहुत लेट हो गए थे, रात का कोई 12-1 बज रहा था। तो वो जब जा रहे थे तो जिस सड़क से उन्होंने जाना था वो टूटी हुई थी। तो उन्होंने गूगल हम्म मैप्स ज्वाइन किया। मैप्स उन्हें एक कच्चा सा रास्ता था, उस पे कह रहे थे कि आप इसी रास्ते से जाओ। और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था उधर जाने के लिए, तो उनको जाना पड़ रहा था। कोई लाइट कोई घर कुछ भी नहीं था, और बिल्कुल हम्म कच्चा जैसे मकान वगैरह होते हैं उस तरह से। तो उन्होंने गाड़ी वो थे और उनके कोई एक और अंकल थे, लाइक दोस्त थे उनके कोई वो। अब वो हम्म दोनों उधर चले थे। वो आगे गए तो बस एक घर था, और बाहर जाके आगे जो घर में लोग बैठे हुए थे उन्होंने उनको रोक लिया। एंड देवर लाइक आप लोग कौन हो और ये वो। तो हम्म मामू ने कहा कि हम इधर अकेले हैं, तो इन सब के साथ रुक नहीं सकते कि इतने ज्यादा लोग हैं कुछ हो जाए। तो वो लोग रिवर्स करके वापस आ रहे थे, तो वो जो लोग थे वो उनके पीछे पड़ गए थे। वो उनके साथ पीछे पड़ गए थे और उनके पास गन्स वगैरह थी। उन्होंने डैम उनकी गाड़ी रोकी के अपने बंदे बुलाए हैं, और क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी ना किसी के साथ लड़ाई थी उन लोगों की। तो उन्हें लगा था कि जो मेरे मामू वो लोग हैं, कि वो लोग उधर तक आ गए हैं। उन्होंने अपने बंदे बुला लिए उसके पीछे ये वो। और उन्होंने जब वो लोग मामू गाड़ी में बैठे हुए थे, तो जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, इनके पास गन है, ये लोग टायर पंचर कर रहे हैं हमारा, जल्दी गाड़ी निकालो यहाँ से। और मामू कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहे हैं, वो कैसे कह रहे गाड़ी निकालो, इनके पास गन्ने हैं, गाड़ी निकालो। और वो लोग उनके साथ पीछा करते करते हासिलपुर तक गए थे। लाइक फिर उधर जाकर उन्होंने नाना बू को कॉल की थी कि हमारे पीछे बंदे आ गए, हम क्या करें, और ये वो ये वो। वो पता नहीं किन किन गलियों में से घूम घूम के जा रहे थे, वो उनका पीछा करते रहे थे जब तक वो अपने घर के अंदर एंटर नहीं हो गए थे हासिलपुर में। और लाइक उनके साथ साल पहले हुआ है अभी। डैम ये तो स्केरी सी ज्यादा थ्रिलर हो गया आई होप दे आर सेफ नाउ वो थ्रिलर था थ्रिलर
हेलो, अनाया की कहानी सुनी जी। I saw my friend stealing petrol from my car. Thing is, she had a drug addiction and she was supposedly clean, quote unquote. Now, but I'm so suspicious of her. What do I do? Do I tell her mom or what? What would you do in the situation? I do nothing यार, पेट्रोल है डाल दो, 1 लीटर और डाल दो, कितना ही लिया होगा. Sir, give Zimal another chance. I have another story. Okay, Zimal, let's give you one more chance. चांस ही चांस है भाई, कहानियां है, सुनाओ जिसको सुनानी है सुनाओ. सर मैंने आपको मैसेज तो कर दिया था कि मेरे पास एक और स्टोरी, लेकिन आई फॉरगॉट कि क्या स्टोरी थी। तो बहुत है Zimal. अच्छा सर वो बूझ कह रहे ना, हैं. बताएं बताएं. फ्रॉड, मेमोरी लॉस, व्हाटएवर। चलो हाँ, शॉर्ट टर्म गजनी गजनी गजनी, शॉर्ट टर्म हाँ मेमोरी. बिल्कुल ओके, बिल्कुल। समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी सर गलती आपकी कोई नहीं स्टोरी नहीं है? है कोई जी. पर्सनल स्टोरी, कोई अपनी मैं स्टोरी? सुनाता हूँ, मैं ये चिप्स को खत्म करूँ ना, भूत को तब तक मौका देते हैं, भूत को मैं चिप्स तो खत्म हाँ करूँ. सर, ओके सर, ओके। जी जी. जी भूत बताएं जी, सर मुझे हुक्म जब करिए. मेरी याद आएगी तो फिर आई विल गो ऑन चलो अगेन। डन 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 डन. जी भूत. Booth, before you speak, Ravya Singh said the most scary story is that CIEs are getting closer and closer day by day. Ravya, these students are chill, they don't care. खुद भी फेल होंगे, मैं भी फेल होऊंगा, सारे फेल होंगे. मजाक कर रहा हूँ यार, कोई नहीं फेल होगा, कुछ नहीं होता. आई हैवंट सेड योर नेम ना किडो. तो भाई ये अपलोड हो जाएगी, उसमें कौन सा नाम शाम थोड़ी ना पता लगता है. अच्छा, अलीना ने एक कहानी, साहा जस्ट अ मोमेंट, अलीना, चलो पहले साहा को चांस देते फिर अलीना की स्टोरी पढ़ते हैं जो इतनी बड़ी टाइपिंग की है. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम, साहा गो है. Sir, firstly, it's not Saha, it's Shaha, like Shah. उनको शाह, अब इधर हम उसकी स्टोरी सुनने आए हैं कि आपकी नाम की प्रोनाउंसिएशन. अच्छा मजाक करो, हाँ शाह. Yeah, जी. it's okay. तो sir, it's like not a direct story. मतलब मेरे एक रिलेटिव थे, उन्हें मुझे सुनाई थी कि उनके जो फादर थे और उनके भाई जो थे, लाइक ताया जो थे उनके, they were like सुबह फजर से वापस आ रहे थे and then रास्ते में उनको like एक बकरा दिख गया था and they were like अब ये अकेला खड़ा हुआ है, what do we do about it? तो वो हम्म. उसको लाइक उसके कान से पकड़ के देवर लाइक वॉकिंग आगे लाइक लेके जा रहे थे उसको अपने घर तक एंड देन दे हम्म. डिडंट टर्न आउट और जब वो अपने घर पे पहुंचे एंड दे टर्नड अराउंड तो उन्होंने देखा कि लाइक पूरा बकरे का कान जो था वो एक्सटेंड होके एक जगह से उधर तक उनके हाथ में आया हुआ था एंड देन लाइक फिर they totally freaked out and they just ran away. It's not like that scary but like स्केरी और क्या चाहिए आपको, किधर बड़ा आके आपको चुप के मार दे कहीं, तो जाहिर सी बात है, यही होता है स्केरी, और क्या करे बेचारे. इज गुड. चिप खत्म हो गए हैं. चलो और किसकी स्टोरी. सर लिसन टू नवल. नवल योर टर्न. फिर अलीना की स्टोरी. नवल, समझ सिंह, लिसन टू नवल. नवल आई आस्क्ड यू टू अनम्यूट. हानिया सिंह, आई हैव वन. चलो हानिया को ऑप्शन दे देते हैं. हानिया किधर है, हानिया. आस्क टू अनम्यूट दे दिया मैंने आपको ऑप्शन. सर इट्स लाइक इस पे एक मूवी भी बनी है, पर हम्म. इट वाज एन इराकी सिंगर, राइट? तो हम्म. हर वॉइस हाँ वाज हाँ, वेरी, मुझे वो देखनी है, वो मैंने देखनी है. जी वो यस. उस पे मैंने रील देखी थी तो आई वाज लाइक आई शेयर दैट। हाँ हाँ, द ईरानी जी मूवी. या सो वो इराकी सिंगर थी। तो वो एक वेडिंग पे शी वाज परफॉर्मिंग, तो फिर उसे एक दूसरा इनविटेशन आया कि आपने यहाँ यहाँ पर आना है एंड यू हैव टू परफॉर्म। एंड इट वाज लाइक वो इनविटेशन रात के 1-2 बजे का था। एंड देन शी वेंट टू द डेजर्ट एंड इट वाज अ लिटरल डेजर्ट, लाइक ना कोई लोग थे, कुछ भी नहीं था। एंड देन शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग, और फिर उस पे आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे। एंड देन आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 1 or 2 hours, शी वाज जस्ट परफॉर्मिंग कंटिन्यूसली। और फिर उन लोगों की शक्लें चेंज हो रही थी एंड दे स्टार्टेड लाइक वेरी डिफरेंट थिंग। तो बस उसके बाद शी वाज वेरी स्केर्ड एंड हर बैंड मेंबर्स वर आल्सो स्केर्ड। लेकिन वो परफॉर्म कर रहे थे एंड देन दे क्विकली रैन अवे फ्रॉम देयर। तो फिर वो पुलिस के साथ नेक्स्ट डे पे आई है, वहां पर कुछ भी नहीं था। तो उठे खड़े हो गए यार, दिस इज क्रेजी. मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ. मैं अब आपको कहानी सुनाता हूँ. ये मैं एवरीवन पे ही रख लेता हूँ, चलो. हानिया नोज शी वॉज देयर ट्रस्ट. रुबाब सिंह. रुबाब, हानिया रुबाब आपके खिलाफ है, कब से लगी हुई है आपके खिलाफ बातें करी. सर अब मुझे डर लग रहा है, साथ में क्लॉक भी. मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये एक्चुअल रियल लाइफ कहानी है.
मेरे मामू जो थे ना, वो और उनके दोस्त जब आज से 15 साल पहले बैरिस्ट्री कर रहे थे, तो बैरिस्ट्री नहीं तो लॉ की डिग्री, ये टिल्स इस्लामाबाद से, टिल्स इस्लामाबाद सबने देखा हुआ है, इस्लामाबाद टिल्स। तो ये जो है उधर से अपना लॉ की डिग्री कर रहे थे, जो भी इनका होता है। तो ये थे, और इनका एक दोस्त है उज़ैर, उज़ैर भाई, तो वो थे। तो इन दोनों का एक शेयर्ड कमरा था, और जो टिल्स के साथ करीब ही इन्होंने जगह पकड़ी हुई थी, हॉस्टल्स थे उधर। तो उन हॉस्टल्स में ना उन हॉस्टल के सामने एक बहुत बड़ा सा दरख्त भी था, बहुत बड़ा दरख्त, बहुत बड़ा दरख्त। और वो फिर बाद में उसको काट लिया इन्होंने। वो बहुत बड़ा दरख्त था, उसका पूरा साया ना जो हॉस्टल पे था वो आता था। अब वो लोग जब मूव हुए ना, तो उसकी जो टेनेंट भी थी, जो सॉरी ये तो टेनेंट थे, जो लैंडलॉर्ड भी थी ना वो हॉस्टल्स की, वो थोड़ी सी अजीब सी थी। वो जो औरत थी बस हर वक्त ऐसे ऐसे स्माइल करती थी, वो डरावनी डरावनी स्माइल देती थी, और बस कहती है हाय हाय काय, तो अंग्रेजी में बातें भी करती है, गुड गुड यू आर हियर लाइक, ऐसे करके ना बातें करती थी सारा, बड़ी क्रीपी अंदाज में बोलती थी। बस वो दोनों तो लड़के थे, कोई फर्क इनको पड़ता नहीं था। अब उजैर भाई जो थे ना, वो थे थोड़े मोटे से, मतलब अच्छा खासा खाते पीते घराने से थे, बहुत मतलब हेल्दी थे। मोटा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ करें, हेल्दी तुम लोग कैंसिल कर दोगे, लेकिन वो थे बड़े हेल्दी से। अब हुआ ये कि जब मेरे मामू और उज़ैर भाई मूव इन हो रहे थे ना, तो उज़ैर भाई की जो अम्मी थी ना, उन्होंने मेरे मामू को ख़ास तौर पे कहा था कि आपने जो है इसको खाना खाने नहीं देना, ना ये नगेट्स खाएगा, ना ये KNN खाएगा, ये सब बैन है, ना चिकन, इस पे खाने की पाबंदी लगानी है। मेरे मामू पतले ऐसे थे, हम सारे ऐसे पतले पतले हैं। तो मामू ने कहा था ठीक है आंटी, कुछ भी ये नहीं खाएगा, सही है। तो इन्होंने मतलब मामू ने कहा था कि उधर तू जो है ना, तू ना चिकन लेके आएगा ना कुछ लेके आएगा, कुछ भी नहीं, इंसान की तरह बैठ के, इनके पास एक खानसामा भी होता था इनके साथ, और बस ये दोनों होते थे, खानसामा फिर रात को घर चला जाता था। अब ये जो है, और खानसामा को अलाउड नहीं थी कि वो कोई चीज़ें ले आए ना, KNN से जो भी नगेट्स वगैरह जो भी चीज़ें थी ना, उस टाइम चिकन था, नगेट्स थे, ये चीज़ें जो मिलती थी, तो मिलती होती थी ये चीज़ें। खैर खानसामा बस सिर्फ कुकिंग के लिए आता था और कुछ लाता नहीं था। अब हुआ ये कि एक दिन, अब अगले कुछ हफ्ता ही हुआ था, मेरे मामू आए, फ्रीज़र खोला, फ्रीज़र में जो है चिकन पड़ा हुआ है। मेरे मामू उज़ैर के पास गए कि उज़ैर क्या कर रहे हो, ये तुम पागल वागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो, चिकन तुम्हें अम्मी ने मना किया है, और तुम फिर हम आंटी मुझे डांटेंगी, ये वो। उज़ैर अब अम्मी की कसमें खा रहा है, अल्लाह की कसमें खा रहे हैं कि यार आमिर, मैं जो है कसम से मैंने चिकन मैं नहीं लाया, मैं कसम से मेरे पास पैसे किधर है, मैं नहीं लाया, मैं नहीं लाया। वो मामू तब के आपस में गपशप भी लगाए, कुट कुट दिए, उसको पकड़ा, एक दूसरे को लड़ाई वड़ाई हुई। अब ये लोग कमरे में गए ही थे, वापस ये लोग निकले, चिकन तो फ्रीजर में पड़ा हुआ था ना, वापस ये लोग निकले, जमीन पे खून, जमीन पे मुकम्मल तौर पे वो खून के वो स्टेन्स नहीं होते, डायरेक्ट खून के स्टेन्स। मेरे मामू ने नीचे देखा, मेरे मामू ने फिर उजैर भाई को पकड़ लिया कि उजैर तुम इंसान का बच्चा, तुम नहीं बन रहे, तुम्हें मैंने कहा है कि इसको फ्रीजर में तुमने सारा गन, उसने कहा मैं तो इसको टच तुम्हारे सामने ही, हम अभी खेल रहे थे, लड़ लुड़ रहे थे, ये किधर से आए पता नहीं जी, पता नहीं। अच्छा दिन गुजरते गए, ये एक वाकया इनके साथ हुआ। फिर ये दोनों एक दिन कमरे के अंदर आ रहे थे, इन्होंने अपना दरवाज़ा खोला, इन्होंने इस चीज़ को बस इग्नोर कर दिया कि भाई चाहे छोड़ो, दफ़ा करो। अब इन्होंने दरवाज़ा खोला, इनका दरवाज़ा नहीं खुले, दरवाजे ये लोग धक्के मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, दरवाज़ा आगे से उस साइड से। वो मामू मेरे कहते हैं कि यार ऐसे था, तो ऐसे दिखता था ना कि कोई उधर से जोर दे रहा है, हम इधर से पुश कर रहे हैं, वो उधर से धक्का मार रहे हैं कोई, लेकिन बहरहाल पुश कर करके अंदर चले गए। अंदर के ये कोई ऐसे ना 2-2 3-3 दिन के गैप्स में ये चीजें होती थी। वो गए अंदर, लाइट्स फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग, वो जाके लैंडलॉर्ड के पास गए कि यार ये लाइटों का मसला है ये, बाकी पूरी बिल्डिंग में सब कुछ सेट, उनकी लाइटें फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग, और वो नहीं होता, वो एकदम से जब लैंडलॉर्ड के साथ ये लोग अंदर आए, लाइटें एकदम से वो फुल ब्राइट नहीं हो जाती, फुल मतलब वो स्केरी मूवीज में भी फुल ब्राइट हो जाती है और फट जाती है, लाइट फुल ब्राइट होके ठक करके गई। ठीक है जी। तो लाइट तो बढ़ गई, और उधर जो लैंडलॉर्ड ने चीख मारी, लैंडलॉर्ड चीख मार के भाग गई कमरे से। अब ये दोनों गए लैंडलॉर्ड के बीच कि यार इधर तो कुछ है, अब इन लोगों की हो गई फट। इन्होंने कहा भाई कुछ तो दाल में कुछ काला है, इधर कुछ है, कोई हिसाब किताब है।
लेकिन ये लोग गए उसके ऑफिस में कि नहीं आप तो सही करो। वो लैंडलॉर्ड अब ऑफिस में बैठ के ना ऐसी क्रीपी स्माइल्स दे रही है, हंस रही, कुछ भी नहीं है, तुम लोग वैसे डर रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो वो कहे तुम 2 मिनट पहले तुम चीख मार के चली, नहीं वो तो थोड़ा सा वो लाइटें फ्यूज हो गई हैं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा ना, क्रीपी से बोल। अब इतने में इसने ये कहा ही तो इसके जो जिधर ये बैठी हुई थी इसके पीछे एक पोर्ट्रेट थी, वो पोर्ट्रेट धड़ाम करके नीचे गिरी है, सबकी फट फुट के बाहर निकली। चलो इन्होंने मुफ्ती को बुलाया, तो इन्होंने कहा चलो कोई आमिल को बुला लो, किसको बुला लो। आमिल एक आया, जैसे अंदर आया, आमिल के नाक से खून, आमिल के नाक से खून निकल रहा है। आमिल जो है आंखों में आंसू, आमिल ने कहा मैं इधर नहीं आ रहा, चला गया। चलता गया चलता गया, कुछ दिन आमिल मतलब वो कारी साहब जो होते हैं दम दुरूद के लिए आते हैं, तो चलता गया कुछ दिन गए। ये लोग इनकी फटी पड़ी कि यार हम तो इधर नहीं, ये लोग अपनी जो टिल्स है ना इधर सोफों में लेटे होते थे कि यार मैं हम नहीं जा रहे घर, वहां पे ये कुछ दाल में कुछ काला है, नहीं जाते थे। अब हुआ ये कि आखिरकार इनको कोई बड़ा अच्छा आमिल मिला, बड़ा अच्छा कोई वो मिला, कारी साहब मिले, वो आया। इन्होंने कहा ये है क्या, आया अपनी तिलावती की, वो उस टाइम सब कुछ हर इधर उधर दराम की आवाजें आ रही है, वो अपनी तिलावत कर रहे हैं। यार आमिल कहते हैं जो मर्जी कहते हैं उसको, बट जो कारी साहब आते हैं ना, तो वो तिलावत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इसमें चीजें भी इधर उधर हो रही हैं, और इन सब की ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कि क्या चल रहा है, और इधर आवाजें भी शुरू हो गई हैं। अब कारी साहब ने इतने में ना खामोशी, बिल्कुल खामोशी हो गई, बिल्कुल सुकूत छा गया हर जगह। कारी साहब भी खामोश हो गए। कारी साहब ने कहा सामने जो कारपेट है ना इसको उठाओ। कारपेट उठाया इन्होंने, तो कारपेट के ऊपर ना ऐसे रेड, जो बड़ा पुराना सा रेड किस्म के पेंट नहीं होता, उसमें ऐसे क्रॉसेस लगे हुए थे, पेंट था, खून नहीं था, पेंट था, क्रॉसेस लगे हुए थे। इन्होंने कहा ये उठाओ। ये उठाया, तोड़ा, नीचे कोई बॉक्स था, इसके नीचे कोई बॉक्स था, क्रॉसेस क्रॉसेस, काला काले से क्रॉसेस लगे थे। इन्होंने उठाया, बॉक्स खोला, उठाया बॉक्स खोला, सारा चेक किया, नीचे गिर जाते थे वो, खोदते गए, इस अपार्टमेंट में, यकीन माने अपार्टमेंट में ये चीज हो रही थी, अपार्टमेंट में खोदते गए इनको ना कोई बोन्स उधर से मिले हैं, वो देखे बोन्स मिले हैं। फिर इन्होंने तहकीक की है, तहकीक की, पता लगा कि इधर पहले रहता था एक हिंदू। उस हिंदू ने बेसिकली क्या किया था, एक मुस्लिम लड़की को, एक मुस्लिम बच्ची को अगवा किया था, और उसका सर कलम किया था, और वो उधर दफनाई थी इसको। ये कहानी पता लगी थी जब इन्होंने पता नहीं किधर बड़ा रिसर्च किया, और वो उसकी भटकती हुई आत्मा थी जो इधर वो, फिर उन्होंने वो दरख्त भी काटे, ये भी। फिर उस दिन के बाद मेरे मामू और उदैर भाई जो थे उन्होंने अपना वो बदल दिया, अपार्टमेंट बदल दिया। लेकिन ये एक कहानी थी जो बड़ी बड़ी हैवी किस्म की है। मेरे मामू जब भी ये कहानी कहते हैं ना उनकी आंखों फुल लाल हो जाते हैं, रमजान में करते हैं कहानी हर रमजान, बड़ी सबकी फटती है। फिर अलिया यस यू शुड, और भी कहानियां हैं, बड़ी कहानी है, लेकिन हैवी कहानी थी। आज टू अनम्यूट अलीदा को, आपको मैं चांस दे रहा हूँ, है ना, इसके बाद आप कभी करते हैं। हाय। हाय अलीदा, चले गो फॉर इट। बेसिकली ना मेरी फ्रेंड की खाला थी, उनका उनके ना लाइक ना अर्ली एजेस में ना मतलब रिश्ते वगैरह आने शुरू हो गए थे। सो लाइक इस टाइम मतलब लाइक उनका ना एक रिश्ता आया। सो लाइक ऑफ कोर्स इतने मतलब लाइक वो लोग नहीं थे, स्टैंडर्ड्स वगैरह पे नहीं थे, तो मतलब लाइक उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। तो फिर मतलब लाइक उनके खाला के पेरेंट्स ने मना कर दिया उन रिश्ते वालों को। बट लाइक वो लोग मतलब इंसिस्ट कर ही जा रहे थे। और कुछ दिनों बाद ना उनके घर ना मेरी उनकी खाला के घर ना मतलब लाइक ना ब्लड के टिश्यूज मिलने शुरू हो गए, दीवार पे खून से नाम लिखना शुरू हो गया। एंड लाइक बाल कटे हुए मिलने शुरू हो गए, मतलब लाइक बहुत ज्यादा काम खराब हो गया था। एंड लाइक क्रेजी, उसके बाद लाइक इतनी मुश्किलों से मतलब ये सारा कुछ खत्म हुआ था, और भी बहुत सारी हैं। क्रेजी यार, क्रेजी। फिर फिर क्या हुआ, उन्हें आमिल शामिल फिर को मतलब बुलाया। लाइक ऑफ कोर्स जो मेरे ख्याल से बाबा वगैरह होते हैं कोई इस तरह के, सो उनसे हाँ, दम वगैरह करवाया एंड ऑल दैट, तो फिर उसके बाद जाके खत्म हुआ। चलो शुक्र है खत्म हुआ, गुड 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 मेरी स्टोरी, खाला के ऊपर नहीं है, जी। मेरी फ्रेंड की खाला के ऊपर है। अच्छा, फ्रेंड की खाला के ऊपर, चलो चलो शुक्र है या उनका भी खत्म हो गया ना।
भूत आपकी बारी, हाँ भूत का आप चेक करते हैं, भूत नाम भी डाला हुआ है, चेक करते हैं। सर मैं बात तो कोई नहीं करनी है, लेकिन सर मैं कब तक देख रहा हूँ बिल्कुल भूत, ये वॉइस चेंजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सही नहीं आ रही है आपकी आवाज। आई मीन मैं भूत हूँ, मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगा किसी को। आप भूत हो, लेकिन वो आवाज सही नहीं आ आज रही ना, वो बड़ी खराब सी आ रही है। वी कैंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप बारे में आप थोड़ा अपना ये गलत बात होती है, ऑफेंड हो जाते हैं। आई एम जेन्युइनली भूत, वी कैंट अंडरस्टैंड। भूत प्लीज सही से वॉइस सही करे, नहीं नहीं समझ आ रही कुछ भी, नहीं आ रही, कसम से नहीं आ रही। आई लव, आई ऑफेंड। भूत, आई लव द एफर्ट, आई लव द एफर्ट, बट नहीं आ रही समझ। मतलब आपने अच्छा वॉइस चेंजर सब कुछ लगाया, अच्छा, अच्छा एफर्ट है, अच्छी एफर्ट है, ये मजा नहीं आ रहा। वो कर दे, बगैर वॉइस चेंजर के कर दे। आप लोगों को मैं एक बात बता, अनाया कह रहे हैं सर मेरी कहानी सुनी। जी अनाया, आपको अनम्यूट करने का मौका देते हैं। ओके सो इट्स काइंड ऑफ फनी। उसमें ना बेसिकली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। जी। इमेजिन आप 8th क्लास में हैं एंड यू आर बेसिकली जाहिल। आप समझे कि आप जाहिल हैं बेसिकली, नहीं ठीक नहीं, है। ना मैं 8 क्लास एंड में, ना मैं जाहिल वाली, ना अनाया क्या हो गया है अनाया। एक सेकेंड प्लीज हियर मी आउट। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सो बेसिकली आपके स्कूल वालों को पता है कि आप इतने पागल हैं, दे डू नॉट इवन लेट यू गो यूज द रेस्ट रूम बाय योरसेल्फ। अगर आपने जाना है तो प्रॉपर आपने एप्लीकेशन देनी है टीचर को, एंड देन यू हैव एन आया बाजी जो होती हैं कस्टोडियन स्टाफ assist you to the bathroom, ठीक है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ जाहिल यू आर, ठीक है, नॉट यू फिर लेकिन में जाहिल का क्या 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 रोल अच्छा। है? तो एक दिन जाहिल का किधर क्या रोल है इसमें? अच्छा, दिस इज हाउ शरारती यू आर बेसिकली, ओके। अच्छा चलो सो सही। व्हाट हैपेंस इज के एक दिन आप और आपके दोस्तों के दिमाग में आती है एक बहुत अच्छा आइडिया टू ब्रिंग फार्ट स्प्रे टू स्कूल, ठीक है। आप फार्ट स्प्रे लाते हैं और आईसीटी लैब के अंदर जाते हैं, ठीक है। एंड दैट टीचर इज समवन हु हेट्स बैड स्मेल्स। वो लिटरली 2 मिनट बाद परफ्यूम लगा रही होती है और वो इट्स टू मच बेसिकली। एंड हम्म। देन आप उस क्लास में स्लोली स्लोली फार्ट स्प्रे स्प्रे करते रहते हो, एंड देन यू कंप्लेन लाउडली अबाउट हाउ बैड द कैंटीन समोसाज आर। आधे घंटे बाद टीचर को कहती हैं कि आई कैन नॉट बी स्मेल एनी मोर, ठीक है। सो वी गो टू हर डेस्क और हमने कुछ चेक कराना होता है और फार्ट्स पे उनके मुंह पे लिटरली लग जाते हैं, एंड देन शी कैचेस ऑन टू व्हाट वी आर डूइंग। एंड देन व्हाट हैपेंस इज के शी कॉल्स द प्रिंसिपल। अब हमने वो फार्ट स्प्रे की बॉटल कहीं ना कहीं छुपानी थी, तो हम उसको डाल देते हैं खाली करके अपनी किसी रैंडम क्लासमेट की बॉटल के अंदर, ठीक है। एंड शी डज नॉट नो कि उस बॉटल के अंदर फार्ट स्प्रे है। तो यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो वो कंक्लूजन ये होती है कि प्रिंसिपल को नहीं पता चलता कि वी हैव अ फार्ट स्प्रे बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी प्रूफ। लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो क्लासमेट ऑब्वियसली शी ड्रिंक्स हर वाटर, and then 30 minutes later what happens is her entire face turns red and she's literally screaming that something is happening to her. She cannot breathe at all, and you're sitting there कि आप वाकई जाहिल हो, because what have you done at this point? And फिर आप क्या करते हो? तो मैं आप जाहिल नहीं चुप हूं ना। करते हो, आप नहीं बताते। अच्छा अच्छा। आप नहीं है सर, आप तो बहुत ही स्मार्ट डिस्टिंक्शन बॉय हो के, नाइस नाइस। अच्छा अच्छा, चलिए लेकिन जल्दी जल्दी, मुकाए इससे मुकाए क्या होता कहानी है, मुकाए, शी गोज जल्दी टू दी करे। हॉस्पिटल, अच्छा। शी गोज टू दी हॉस्पिटल और ऑब्वियसली दे फाइंड आउट समथिंग्स रॉन्ग विद हर, लेकिन आज तक उसे नहीं अलाया, पता अलाया कि ये सॉरी। बच्ची कौन है। Good, good. I love the story. Rubab has just said दैट्स something. इट। Rubab is saying, bro said Jahil for 1,000 times. Sorry, Anna. It's not what I'm saying. That's what Rubab said. But it was a good story. आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जेन्युइन, किसी और के पास कोई कहानी है वरना मैं बता देता हूँ। किसी और के पास है कोई? है? रबाब से बहस हो रही जा रही, नींद आ गई है। सर आपके एक्सप्रेशन, सर आप बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। एक ज़माना ऐसा था, ये जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये मैंने एक्सपीरियंस भी बहुत की हैं अपनी ज़िंदगी में।
बहुत ज़्यादा मैंने की, वो खैर कहने के लायक, बताने के लायक वो चीज़ें नहीं हैं कुछ। सम ऑफ दोज थिंग्स आर, आई कैंट इवन टेल यू गाइस व्हाट वीव बिन थ्रू एंड व्हाट वीव एक्सपीरियंस्ड। मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ एक लड़का काम करता था, उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ। वो बता रहा था कि सर, मैंने ना, उस लड़के ने, अपनी अम्मी ने ना, ये तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, बड़े ऐसी जगहों से आ रहे होते हैं जिधर इन बेचारों की तो वैसे कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, तो शादी भी बड़े सोच समझ के ये लोग ऐसे कर लेते कि बस जो भी, बस हो, जो ताया की बेटी हो, चाचू की बेटी हो, जो भी हो ना, ये वो शादी इनकी करा देते हैं, खाला की बेटी। तो इसकी शादी तय हो गई थी इसकी खाला की बेटी से, ठीक है, जो हमारे साथ लड़का काम करता था। अब हुआ ये कि खाला की बेटी के साथ तो इसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन ये तय, इसको कोई इतराज इससे नहीं था। पर हुआ ये कि ये किसी दिन दोस्तों के साथ निकला उधर, कोई गॉड नोज वल्लाह आलम, ये तो मुझे यही बताता था कि यार इधर वो एक लड़की थी, वो उसने इसको देख लिया, आंख मटक्का हुआ, उसको वो पसंद आ गई। अब उसको जब वो पसंद आ गई तो इसने तो अब कहना था कि यार मैं तो खाला की बेटी, उस लड़की से फिर बातचीत भी शुरू हो गई उसकी, मैसेजेस जो भी इनके टेक्स्ट टूक्स्ट हुए, बस इसने कहा मैं तो इस लड़की से शादी करनी है, और ये वो। खैर, इसने ना अपनी माँ को बताया कि मैंने उस लड़की से शादी की, मैंने तो खाला की बेटी से शादी नहीं की। माँ ने तो पहले उसको कोटा छोटा, बाप ने कोटा, माँ ने कोटा कि हम किस, ये जो टिपिकल होता है कि किधर मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, ये वो, हमने उनको जबान दी है, फलाना टिमकाना, फिर स्पेशली पुख्तून फैमिलीज में। तो खैर, वो खैर नहीं माना, उसने कर दी शादी उस लड़की से, ठीक है, जबरदस्त, मतलब माँ बाप की बात नहीं मानी और शादी कर दी। अब ये किसी इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं, मतलब ठीक है, उसका दिल चाह रहा था, शादी करनी थी, तो बस उसने कर ली शादी। अब शादी के पहले महीने में इनको ना अचानक अचानक से दोनों को ख्वाब आते थे। एक को ख्वाब आता था, जो ये लड़का था, इसको हमेशा ये ख्वाब आता था कि ये अपनी बीवी का गोश्त खा रहा है। हर रात ये ख्वाब आता था कि ये अपनी बीवी का गोश्त खा रहा है, मतलब लिटरली, मतलब उसके हाथ काट रहा है, हाथ खा रहा है, हाथ काट रहा है, हाथ खा रहा है। और इस औरत को ये ख्वाब आता था कि ये, उस औरत को ख्वाब आता था, औरत को, इसको ये ख्वाब आता है कि ये अपने, इन दोनों का कोई बच्चा है और वो उसको जिंदा दफन कर रही है, जिंदा दफन करिए, जिंदा दफन करिए, जिंदा दफन करिए। इन दोनों का कोई बच्चा है और उसको जिंदा दफन करिए। वक्त बीतता गया और इन दोनों की, द वाइफ बिकेम, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, साल डेढ़ साल हो गया था, वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग, और उनका बच्चा हो गया। और इसमें ना, इस पूरे साल डेढ़ साल में इसकी तबीयत, इस बीवी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। मतलब हर वक्त बीमार होती थी, इसको भी बुखार होता था, इसको भी बुखार होता था। ये जब मेरे साथ काम भी करता था, ये बहुत बुखार इसको सारा टाइम, मैं कहता था क्या हो गया, क्या हो गया, क्या, बुखार होता था इसको। फिर उसको जो है डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर बस कोई कोई डॉक्टर कहता है कोई मसला नहीं है, ये बस थकावट है, थकावट है। और बीवी भी बहुत बीमार थी। अब बीवी ने जो है, जब इनका बच्चा हुआ, कुछ दिन हुए, कुछ टाइम गुजर रहा था, इनके ना घर में जो छोटा एक कमरा होता है जो भी, तो उनमें ना अजीब और गरीब इनको आवाज़ें अब आने लग गई। अजीब और गरीब आवाज़ें होती थी रात को, ये आवाज़ आती थी। या कभी दस्तक दस्तक होती थी दरवाजे पे, धड़ाम से, डस 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 डस, फिर आहिस्ता आहिस्ता टक 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 टक। ये उसकी कहानी है जो वो मुझे सुना रहा था। तो फिर टक 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 और ढस 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 टक टक ऐसे। फिर उसका नाम लेते थे कभी कभार कि किधर हो, किधर हो, तुमने तो कस्में खाई थी, किधर किधर, ये पश्तो में बता देते ना, चरते चरते, ऐसे करके आवाजें आती थी। तो फिर वक्त गुजरता गया, ये बच्चा भी कोई एक महीने का हो गया, और बीवी बड़ी, बहुत बीमार, बहुत बीमार।
एक दिन बीवी जो है वो कमरे में दाखिल हुई, और बकौल इसके कि इसकी बीवी को चीखने की आवाजें आ गई, इसकी बीवी को चीखने की आवाजें आ गई हैं। और 2 मिनट बाद, वो अक्सर नहीं होता, किसी कोई बंदे दूसरे बंदे को चीखता हुआ देखे तो वो खुद चीखना शुरू कर देता है ज्यादा डर से। तो बीवी भी चीखने लग गई। बीवी चीखने लग गई, ये कमरे में गए, इसने कहा, खुदा की कसम खा के इसने मुझे कहा कि खान मैं झूठ नहीं बोल रहा, कमरे पे ना दीवार के ऊपर, जो एक ही दीवार था सफेद थोड़ा बहुत, उस पर लिखा था, पश्तो में हुआ था चित्तासुला मर्ग, मतलब तुम दोनों की थी मौत। और वो चीख 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 के रो पड़ी, बेहोश हुई बीवी। बीवी को खैर अस्पताल ले गए। फिर ये कारी साहब को बुलाया इन्होंने, कारी साहब ने दम वगैरह की, कोई आपको तो पता है कोई फ्रॉडिया कारी साहब भी होते हैं। तो चलता गया। 2 साल अब उसकी शादी को हो गए थे। 2 साल, 2 साल हो गए थे। एक रात ऐसी आती है कि एक रात ऐसी आती है कि इसकी बीवी अचानक से उठती है, और इसने मुझे बताया खान कि मुझे समझ नहीं है कि ये क्या कर रही थी। इसने इसका गला दबाना शुरू कर दिया, और अपने नाखून जो है ना इसकी इस गर्दन में इतने डाले कि इसकी गर्दन से खून निकलना शुरू हो गया। और ये कहती कि तुम्हें मैं मारूंगी, तुम्हें मैं मारूंगी, तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, मारूंगी। और पश्तो में ना ताबा मलकोम ऐसे करके, और इसकी ना गर्दन से ना, और ये इसको पकड़ने की कोशिश करे, और ये तो है भी बड़ा मतलब हेल्दी बंदा था। कहता खान मुझे पता नहीं मेरे में ताकत, उसकी जो ताकत उस टाइम थी, तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे अंदर कोई वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं क्या करूं। तो वो बिल्कुल उसके गर्दन से खून, ये वो। अब इतने में ये इसका गर्दन दबा रही है ना, और इतने में ये हंस के इसको कहती है क्या, इस कहती है, तुम्हें तो चलो छोड़ती हूँ, लेकिन ये नहीं बचेगा। और जैसे ये बात करती हुई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इसने ये बात की, इसने अपने बच्चे को उठाया और जमीन पे फेंका, तो उधर ही बच्चे की मौत। और फिर और फिर उसने क्या किया, फिर उसने जाके बच्चे का सर, और ये चीख रहा था, इसने चीखा, ये बाहर गए। इसने इसकी बीवी ने बच्चे को फेंक के ना, अब उसके सर और पैर और हाथ में यूं यूं कर रही है और खेल रही है, यूं यूं करके खेल रही है। ये हाँ हाँ, 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 वो आवाजें, ये मुझे, और ये पागल हुई। इसने पकड़ा, साथ में ना कोई इनके पास बेलचा पड़ा होता है क्या, इसने वो ब्रिक लिया, बेलचा लिया, और रख के अपनी बीवी के सर पे मारा। इसने अपनी बीवी के सर पे मारा वो, और बीवी उधर गई, बीवी भी उधर मर गई उसी टाइम करके। तो इसने उसको, और इसने अपनी बीवी को, और फिर वो कारी साहब आए इसको, फिर मेरे से, मैं तो इसको वो कर इसको, ये मेरे से बहुत टाइम पहले चला गया था, ये कहानी से बहुत सालों पहले ये चला गया था। फिर उसके बाद ये वापस आया था, इसने ये कहानी सुनाई थी। फिर मतलब इसके साथ ये 4-5 सालों में इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। फिर ये जेल गया उधर, की फिर वापस जब आया था ना, तो इसने मुझे ये कहानी सुनाई थी। इसने मुझे इस कहानी सुनाई थी 2017 की बात है। 2017 में इसने मुझे एक कहानी सुनाई। 2018 में खबर आई कि इसने अपने कनपट्टी पे बंदूक रखी और अपने आप को गोली मारी। तो ये कहानी थी। तो इसलिए इसकी पूरी, और फिर बाद में इसका जो भाई था, इसने मुझे खबर जिसने मुझे खबर दी, इसके भाई ने जब तहकीक की, इनके घर में हर जगह पे जो बाल होते हैं, नेल्स होते हैं, जो उंगलियों की नेल्स, बाल, इनके जो है हड्डियां, ये सारी चीजें इनके घर से मिली। इनके वो एक कमरे में, घर तो इन बेचारों का क्या ही होते, एक कमरे में वो सारी चीजें हर जगह जगह पे फिट हुई थी। तो ये कहानी है, मतलब स्कीरी, वेरी वेरी स्कीरी इंडीड। और किसी के पास कोई कहानी है कि नहीं? मेरी है। रोहेल, रोहेल को मौका देते हैं, रोहेल को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर सो बेसिकली मेरी खाला की एक हॉरर स्टोरी है। तो जी। जब शादी से पहले मेरी अम्मी और लाइक खाला लोग सारे एक साथ रहते थे, तो हमारी नानी के घर में। तो वहाँ पे लाइक एक सीढ़ी होती थी ऊपर जाने की। तो जब वो जैसी वो सीढ़ी पे चढ़ती थी तो वहाँ पे एक उनको काली काली बिल्ली नजर आती थी, काला बिल्ला या काली बिल्ली नजर। ओए, तो ना वो किसी करे। और को, मेरी अम्मी को और किसी और मतलब खानों को नजर नहीं आती थी, सिर्फ उनको नजर आती थी। अच्छा। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया, जब भी उनको दिखती थी वो हर दफा चिल्लाना शुरू करती थी। और हम्म। तो एक दिन फिर हमने सबने उनको देखा, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ तो कोई है ही नहीं, और उनको हम्म। उनको हमने यही बोला कि आपको कोई वहम होगा या नहीं। फिर हाँ। एक दिन मेरी नानी ने लाइक उनसे ये सब पूछा, और लाइक फुल एक्सट्रीम हो गया था। लाइक वो मेरी खाला सो हम्म। रही थी, और उनके पूरी सीने के ऊपर वो बिल्ली चढ़ गई नींद में। ना करो। वो उन्होंने देखा। हाँ, तो ये सारा हुआ था। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये सारी बात नानी को बताई, और लाइक ये सारा सीन हुआ। तो नानी ने फिर सूरह यासीन पढ़ना शुरू की 30 दिन के लिए। उन्होंने दुआएं वगैरह पढ़ी, वजीफे पढ़े। और जब उन्होंने ये सब पढ़ा तो बिल्कुल लाइक आखिरी दिन पे जब ये हुआ ना, जब उनका हम्म। लाइक लास्ट डे था रेसिटेशन का, तो एक जिन आया और उन्होंने मेरी नानी का जोर से गला दबाया। ओए। और लाइक उनकी हालत बहुत खराब हो गई, और फुल उनका चेहरा ब्लू हो गया, और उन्होंने बहुत मुश्किल से रिसाइड किया करते करते, और फाइनली फिर वो उस जिन से जान छूटी। फिर वो आइंदा कभी नहीं दिखा वो बिल्ला। ओए यार, ये एक्चुअल में ना बड़ी स्केरी चीज। व्हाट्स योर एज? माई एज है 55। मैं आपको एक 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 और बात बताता हूँ। इतनी कोई स्टोरी नहीं है, फिर इसके बाद जिसकी स्टोरी है वो फिर आप सुनाएं। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात बताऊँ। एक न्यूज़ पे आप चेक कीजिएगा, अभी भी वो न्यूज़ पे वो चलती है। हर दफ़ा यूट्यूब पे भी आती है वो न्यूज़। रमज़ान ये लाइव ट्रांसमिशन नहीं है, इसमें वो आती है। और हर साल वो यूट्यूब पे रिकैप भी होती है। वो न्यूज़ आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे। एक औरत ने रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन में उसने कॉल की, और वो जो मुफ्ती साहब से सवाल ववाल नहीं करते, उसने कॉल की। वो चीख चीख की रोती है, ये यूट्यूब पे मौजूद है। वो चीख चीख के रो रही है, चीख चीख के रो रही है। तो वो कह रहे हैं क्या हुआ, क्या कहती है, मुझे अल्लाह माफ कर देंगे, मुझे अल्लाह माफ कर देंगे। हुआ क्या बीबी, हुआ क्या बीबी? नहीं 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 नहीं, मुझे अल्लाह माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो मैं क्या, क्या हुआ, क्या हुआ बीबी, बताओ क्या हुआ? बीबी ने कहा कि मैं काला जादू करती थी, मैं काला जादू करती थी, मैं बीवी और खावन के बीच में लड़ाइयां पैदा करती थी। काला जादू करती थी, काला जादू, और चीखने लगी, काला जादू करती थी, काला जादू, और चीखने चीखने। तो उन्होंने कहा कि चलो आपने तौबा कर लिया। कहते नहीं 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 नहीं, वो कहती है आपने तौबा कर लिया, तौबा कर लिया, कुछ नहीं होता। औरत कहती नहीं नहीं नहीं, मैं काबा आई हूं, मुझे काबा नजर नहीं आ रहा, मैं काबा आई हूं, मुझे काबा नजर नहीं आ रहा। ओ यार, वो जो लाइव ट्रांसमिशन पे वो हम देखते रहा कभी, कि मुझे तो काबा नजर नहीं आ रहा, काबा नजर नहीं आ रहा, वो चीखे चीखे, ओ तेरी खैर। वो जितना हैवी चीज थी ना, बंदी की फट के हाथ में आ जाती है। ये हेल, आई थिंक आई हैव गॉट वन। ये मतलब एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन वही 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 तो रोटी खड़ी हो गई। जी राफिया आप बताएं, हम तो वैसे ही वेले बैठे हुए हैं, आप लोग वैसे ही फेल होने हैं सब में। सर वालेकुम सलाम राफिया, इनलाइटन अस। सर इट्स एक्चुअली राफिया नॉट राफिया ओके एंड राफिया जी। सो ये मेरी मामा की कहानी है। मामा तब लाइक बहुत छोटी थी, तो मामा के लाइक घर में ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो नाना बू ने कहा था मामा को कि ना एक शायद किसी नेबर से के घर से कोई टूल्स वगैरह लेकर आओ। रात का टाइम था, मामा बहुत छोटी थी, मामा गई। मामा जानी लाइक वापस जब आए ना, तो आपको पता तब घर छोटे छोटे होते थे और मतलब हम्म। मैदान खुले खुले। तो वहां पे उनको एक लाइक डोंकी नजर आया बेसिकली। हम्म। तो वो जब वापस आ रही थी ना, शी नोटिस दैट कि वो डोंकी ना बड़ा होने लग गया, लाइक आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज डबल 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 ट्रिपल बढ़ता जा रहा है। एंड शी वाज लाइक शी गॉट स्केयर्ड एंड उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा वहां पे। शी जस्ट रैन अवे लाइक। घर पहुंची, नानो को बताया। तो नानो वाज लाइक कि आपने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा? मामा वाज लाइक नो। तो उन्होंने लाइक उनको सूरतें वगैरह बताई, तो ये पढ़ो तो। और एक और ये थी कि ना हमारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में ना
हम्म कहते होते थे एक एक क्लास उसका नाम था लाइक मैरी क्यूरी। तो वो सेक्शंस थी ऐसे ही। तो जब हम छोटे थे ना तो हम कहते थे कि वो लाइक हॉन्टेड है। हम हम्म लोग आपको पता है क्यूरियोसिटी भरती है कि जाना है देखना है क्या है वहां पे। हम्म तो पता नहीं अल्लाह ही जानता वहां पे कुछ था कि नहीं था बट इतनी स्टोरीज थी वहां पे ऐसे कि लाइक वहां पे फ्लाइंग चीजें नजर आती हैं वहां पे ऐसे खून खराबा ये वो। हम्म तो स्टफ लाइक दैट। क्रेजी क्रेजी स्टफ। मतलब ये है, ये चीजें बड़ी ना, मैं, जब आप इन चीजों की बातें करते हैं ना, सुनने में तो यही आया कि आप ये बातें करते हैं ना तो ये आ जाती हैं। जी आई साहब, आप बताइए आप। मेरी मेरी बहन ने मेरी खाला के साथ जो हुआ था उसकी कहानी सुनानी है। जी जी, बताइए बताइए, वीर ऑल इयर्स। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम पहले तो अस्सलाम। ना मेरी एक खाला थी मतलब ना वो बहुत लाइक थी मतलब वो टॉपर थी। तो ना हम्म वो अपने तब वो गांव में रहती थी तो अपने गांव के पास ही ना एक हॉस्टल में पढ़ती थी। तो वो ना हम्म हर साल मतलब टॉप करती थी मतलब वो बहुत मतलब मेरी मामा अपनी असाइनमेंट्स में उनसे करवाती थी। तो ना अच्छा। उनकी जो रूममेट्स थी ना वो जल थी। लेकिन ना उन्होंने ना मेरी खाला ने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्हें ना कोई एक साल ना उन्हें बहुत कोई अवार्ड मिला था किसी प्राइम मिनिस्टर से कि मतलब पूरे पाकिस्तान में जैसे डिस्टिंक्शन टाइप हुई थी। हम्म तो ना मेरी खाला को उनकी रूममेट्स ने कह दिया उस अवार्ड के बाद कि हम देखेंगे अब इस साल तुम कैसे टॉप करती हो। मेरी खाला ने इग्नोर किया। जी। तो अब एग्जाम्स आ रहे थे करीब आ रहे थे तो पढ़ती थी या घर आ जाती थी। अब वो ना उस दिन घर से गई मतलब नाना अबू से मिलके और अच्छा वो गई तो नाना अबू ने कहा पेपर देने चली जाना अभी ना आ जाओ। लेकिन खाला ने कहा नहीं मैं उधर पढ़ लूंगी फिर मैं उधर ही जाती हूँ। तो पेपर की रात थी अब उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि तुम इस साल टॉप कैसे करोगी। तो ना हम्म उन्हें पता था कि अब कोई मतलब और वे नहीं है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना उन खाला का मर्डर कर दिया। और फिर अगले दिन जब न्यूज़ है उनकी रूममेट्स ने और उन्हें जो मतलब उनके घर था मतलब मेरी मामा वगैरह को कुछ और बताया गया था क्योंकि उनके पास लास्ट चांस हो था। उनकी रूममेट्स बहुत जेलस थी उनसे। दिस इज क्रेजी। कत्ल कर दिया। उफ, अल्लाह अल्लाह। ओए ओए। ब्रदर, somebody से खाला वाला हाल ना हो इसलिए मैं पढ़ती ही नहीं। इट्स क्रेजी यार। दिस इज खाला का, यार दिस इज क्रेजी स्टफ। चलो किसी दिन लगाते हैं, सेशन लगाते हैं। आप लोग वैसे भी पढ़ना वढ़ना तो कोई नहीं है, मेरी पढ़ाने का तो कोई मकसद ही नहीं है, पढ़ना अपनी है नहीं। जिमल सिंह माय टर्न। चलो जिमल, ये जिमल की लास्ट स्टोरी सुनते हैं फिर बस निकलते हैं यार। मुझे नींद आने लगी और मैं दरूद शरीफ भी अभी पढ़ूंगा। All right, hello for the second time, everyone. हाय जिमल, जी First of बताइए। all, Aiza, I was not expecting that. You have my condolences. पहले मैं joke मारने लगी थी फिर मैंने कहा Brendo because I really wasn't expecting that ending. Oh God. हम्म So let's try to lighten up the mood here. मैं कोई नहीं funny नहीं, story लड़कन अब नहीं, नहीं नहीं, हम स्केरी स्टोरी के साथ ही सोएंगे आज रात सारे। यार कोई मेरे पास लाइटन अप funny story नहीं है ना। मेरे पास funny stories है 3-4। नहीं। नहीं, फनी फिर अपने बाहर रखनी नहीं, पर रहने दे, छोड़िए ये लोग सारे डरे रात को। हाँ, फनी स्टोरीज का सेशन कल कर लेंगे। हाँ, सही है ना दिमल। फनी Okay, okay, स्टोरीज का okay. इंशाल्लाह कल करते हैं। अब देखिएगा, अभी भी वक्त है, सीआईएस के लिए पढ़ लें, अभी भी वक्त है। देख लें फिर, ये कहानियां सुन लें आप लोग, बाकी मर्जी आपकी अपनी अपनी है। अगर तो आप नहीं पढ़ेंगे, वो देख लें। ये पढ़ाई के साथ खैर इसका कोई लिंक है नहीं वैसे, लेकिन देख लें फिर, देख लें। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, अपना अपना देख लें सारे। और आज रात जो है मेरा रोज़ा, 11:30 1 बजे रात के मेरा क्या रोज़ा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये गौर से सुनिएगा सारे, कि द स्केरियस्ट स्टोरी इज गोइंग टू बी फेलिंग योर सीआईईज। तो याद रखिए, काम पे ना टांगे और पढ़ लें। ये स्टोरीज स्टोरीज तो चलती रहेंगी, लेकिन जैनब सिंह आपके पीछे कोई है।
नहीं है, कोई भी नहीं है जैनब, कोई भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गाइस, आप इंजॉय करें सारे। सर, हैव यू वॉच रुबाब? यू नो, बैक इन द डे वी यूज्ड टू वॉच आहट। ये वो सोनी पे आता था ना, सोनी पे आहट आता था ना, ओए ओए ओए, आहट, आहट, ऐसे आता था। और स्टार प्लस पे भी आता था, स्टार प्लस पे, सोनी पे, ओए 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 ओए, बहुत स्केरी होता था यार, यार आपको पता है पाकिस्तान में भी एक ड्रामा आया था, वो एक प्रॉपर ड्रामा होता था जो बहुत स्केरी होता था। उसमें पता नहीं, वो मैं अम्मी के साथ वो देखता था, अम्मी फिर मेरी नहीं देखती थी, और वो सैटरडे संडे को उसकी एपिसोड आता था। एक अमेरिकन हॉरर स्टोरी आता था नेट जियो पे, मुझे याद है, सैटरडे संडे को। और एक सैटरडे संडे को बाकी ये स्टोरीज आती थी। ये एक ड्रामा आता था, पता नहीं क्या, वो दोबारा, वो ड्रामे का नाम था वो दोबारा। वो जो ड्रामा था ना, कसम से वो बहुत रियलिस्टिक था, बहुत रियलिस्टिक था, वो दोबारा। ओए गाइस, ये याद रखिएगा। ए बस, मर्दी बत्ती अपनी है, वो दोबारा। बाकी सारे आज अम्मी अब्बू के साथ सो जाएं, मैं तो इधर अकेले रहता हूँ इस मकान में। लामकान ना हो जाऊं मैं कहीं। तो भाई जो भी इधर है माफ़ कीजिएगा, इनके पीछे जाएं, जो भी हैं इनके पीछे जाएं, मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर, आई लिव अलोन इन अ रूम, यू लिव अलोन इन अ रूम। मैं इतनी बड़ी जगह में अकेले रह रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी खातिर करें। मैं, मेरे पास कोई भी नहीं है, और अंधेरा है, घुप अंधेरा है, घुप अंधेरा। आई वॉच कॉर्प्स वॉचर, मजे का नहीं है हमारे, वो बड़ी रिपीटिशन है, वो बंदा मरता है, फिर वही चीज़ बार 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 बार, और फिजूल की मंजे की चीज। सर, समबडी सिंह शादी कर लें। मैं कहूँ सीआईएस पास कर लें, शादी हो जाएगी। हाँ, सीआईएस कर लेना पास। लेकिन यही है। चलो गाइस, लव यू ऑल, बाय, चाओ, अस्सलाम वालेकुम।